चलिए हेडिंग डालेगा अर्थ एंड मून. ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, अब इससे पहले थोड़ा सा इससे पहले एक चैप्टर और कर लेते हैं हम लोग. हेडिंग डालिएगा तो कहाँ से था वो जो थीम लेना था ना, थीम. ठीक, ओके. हेडिंग डालिएगा अर्थ, रियाम्स एंड systems. Earth, realms and system. Earth, realms and system. Okay. Now, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा था. Yesterday we discussed about that Earth behaves like a system. Okay. Earth behaves like a system. Okay, and Earth is a subsystem. Earth is a subsystem. Earth is a subsystem of solar system. Okay, and yesterday we have discussed that every system, has interdependent elements or subsystem. Okay, and these subsystems combines or integrates to create a whole. Is it clear? Is it clear? Yesterday we have discussed this point. So Earth is an integrated whole of four realms. Okay, and what are those four realms? What are those four realms? जल्दी से याद करो. हाँ, yes, geosphere. Okay, and then atmosphere, and then hydrosphere, and then biosphere. Okay, this is not a complete list. अगर आप चाहो तो और भी बना सकते हो. For example, we can take cryosphere. Okay, cryosphere. We can take cryosphere. Okay, we can take another one, pedosphere. Pedosphere मतलब soil, the region of the soil, that is called to be as a pedosphere. So what we have discussed yesterday, हम लोगों ने कल क्या डिस्कस करा था? That Earth behaves like a system, and what is system? An integrated whole. Okay, or you can say that where it is a integration of various biological or integration of various biological, physical and human related phenomena. Okay, and which creates a whole, and that whole is called to be as a Earth system. Okay, write down the first point. लिखिएगा
आप लोग नोट्स लिखेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नोट्स लिखने में इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, लिखिएगा, लिखिएगा। अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 अर्थ कंसिस्ट ऑफ 4 interdependent realms known as atmosphere, geosphere, कोई भी पहले ले सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप, एटमॉस्फेयर, जियोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। रियाम बेटा एक मंडल को कहा जाता है, स्फेयर को कहा जाता है, ओके, रीजन को कहा जाता है, ओके। एटमॉस्फेयर, जियोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ओके। Now write down the first one, geosphere. Geosphere. What is geosphere? Okay. Now, geosphere का मतलब क्या है कि अगर हम अर्थ को लेके चलते हैं from the surface to the center, from the surface to the center. Okay. लिखिएगा, it includes a solid part of the earth from the surface to the center. Okay. And what is the depth of the center? Center कितनी डेप्थ पर है सरफेस से? ऑलमोस्ट कितना आ जाता है हमारा? 6400 किलोमीटर. That we take it to be as a 6400 kilometer. Okay, approximately. Okay, that is 6400 kilometer. Okay, लिखिएगा, its upper part is known as its upper part is known as lithosphere. Its upper part is known as lithosphere. Upper part is known as lithosphere. Its upper part is known as lithosphere, which means a region of rocks. Litho का मतलब क्या है? Rock. A region of rocks. Okay? लिखिएगा, below the lithosphere is asthenosphere. Below the lithosphere is an asthenosphere. Okay? And the remaining part is known as barysphere. Barysphere. And the remaining part is known as barysphere. क्या बेटा? 4. नहीं बेटा, barysphere. Okay? अलग अलग किताबों में कुछ, किस किताब में क्या दे रखा है मैं नहीं कह सकता. Okay, but the right one is barysphere. Okay, so we have lithosphere, asthenosphere. अगर आप चाहो तो बीच में एक छोटा सा स्फेयर और आता है, जिसको मेसोस्फेयर कहा जाता है ना, जिसको मेसोस्फेयर कहा जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी से वेरी करते हैं. कुछ लोग पूरे कंप्लीट को बैरिस्फेयर लेते हैं, कुछ छोटा सा पार्ट मेसोस्फेयर. ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट वन. Write down the next one. In terms of chemical differentiation, it is divided into crust, mantle and core.
it is divided into crust, mantle and core. It is divided into crust, mantle and core. Point is clear? This point is clear? So this is all about the geosphere. Okay, and we are going to study about the geosphere in geomorphology. About the geosphere we are going to study in geomorphology. Okay, now write down the next one, atmosphere. Second realm is atmosphere. Okay, and what is atmosphere? What is atmosphere? Yeah. Okay, what is atmosphere? Yes, gaseous envelope. Gaseous envelope. Okay, that surrounds the earth. That surrounds the earth or a geosphere. Okay, that surrounds the earth or a geosphere or geosphere. Okay, next point, it is a mixture of gases which includes nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, helium, एक्सेट्रा. ठीक है, एक्सेट्रा लगा दो. Okay, now write down, it is a shallow layer. It is a shallow layer. And why it is shallow? It is a shallow layer. Okay, बच्चों चाहे आप कोई भी किताब पढ़ना, लेकिन आप एग्जाम टाइम में नोट्स जरूर पढ़ के जाना. ओके, जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा या अभी जो लिखवा रहा हूँ आपको, आप चाहे दुनिया जान की किताब पढ़ते रहना, दुनिया जान का इंटरनेट का मैटर देखते रहना, लेकिन ऐसा मत करना कि जो आपको क्लास में लिखवाया गया है वो आपने पढ़ा ही नहीं है, रिवाइज ही नहीं. ओके, लिखिएगा, इट इज अ शैलो लेयर. एंड व्हाई इट इज अ शैलो लेयर? it is a shallow layer because 99% of the atmosphere, nearly 99% of the atmosphere lies within 30 kilometer, within 30 kilometer. Okay, so that is why it is called to be as a shallow layer. Okay, and the remaining 1% you will find to a greater height. Okay, but most of your atmosphere is confined within this layer, within 30 kilometers. Okay, now write down the next one. लिखिएगा, next point लिखिएगा, it provides air to breathe. It provides air to breathe and protect from harmful ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation. Okay, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखिएगा, एनर्जी एक्सचेंज takes place between the surface of the earth and atmosphere, and also between
atmosphere and outer space. Okay? Energy exchange take place between the surface of the earth and atmosphere and also between the atmosphere and the outer space. Okay? अब देखो किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है कि हमारा जो सरफेस है वो सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है, इट रिसीव्स अ सोलर रेडिएशन एंड देन इट re-radiates. Okay, so you know this is called to be as a solar radiation and this is called to be as a terrestrial radiation. Okay, and terrestrial radiation is absorbed by our atmosphere. Okay, because our atmosphere is generally transparent to the solar radiation. Okay, not all the radiation, not for all the radiation, all the solar radiation, but the major part of the solar radiation do not get absorbed into the atmosphere. But the major part of the terrestrial radiation, okay, or you can say that our atmosphere is relatively opaque, okay, to the terrestrial radiation. So as a result of this absorption, the heat is absorbed, which results into the warming of the atmosphere. So the warming of our atmosphere is a result of terrestrial radiation, not of the solar radiation. Okay, and if this warming do not takes place, if this warming do not take place, then the earth would not be called to be the habitable planet. Is it clear? Because if the radiation is received and if it means the incoming solar radiation will heat the earth, and if there is no mechanism to absorb the outgoing radiation or the terrestrial radiation, then the temperature of the earth will reduce to a greater degree. Okay, it will go into a minus, it will go to its radiative equilibrium temperature. And as a result of this radiative equilibrium temperature, the temperature will be very less and then it will result into a relatively very colder planet. Is it clear? And that will not be a habitable planet. Is it clear? So you may be aware about the atmospheric greenhouse effect. पढ़ा है आप लोगों ने atmospheric greenhouse effect and how this atmospheric greenhouse effect take place because of the presence of greenhouse gases. And these greenhouse gases includes methane. Okay. We have carbon dioxide, carbon monoxide also has a greenhouse potential, and the most important is the water vapor. Okay, most important is a water vapor. So the water vapor is also water vapor plays a very important role in the transport of the heat from one place to the, because the place from where they will absorb the heat, and then they will transport the heat to other place. How they are going to do this one? बिकॉज जहां से वो इवेपोरेट होगा वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जहां पे वो कंडेंस होगा वहां पे हीट को रिलीज कर. यू गॉट दिस पॉइंट? सो our and as a result of this energy exchange between the surface and the atmosphere, as a result of this energy exchange between the surface and the atmosphere, we have a phenomena that is called to be as a weather. Okay, and different places may have a different level of energy exchange, and as a result of which the weather conditions of a different places may be different. Okay, the weather condition of a Jaipur may be different from the weather condition of the Delhi. Okay, because the surface of the Jaipur may have a different type of a configuration and a surface of a Delhi may have a different type of a. Is it clear? So as a result of this energy exchange between the surface and the atmosphere and also between the atmosphere and the outer space, we have a phenomena which is called to be the weather. Okay, and all the weathers are determined by the movement of the gases. The movement of the gases in a horizontal manner is called to be as a wind. Okay, and wind, when transport from one place to the another, or when they move from one place to the another, they carry the heat. Is it clear? They carry the heat and they transport the heat, and heat is generally carried in the form of a water vapor. Okay, so water vapor will be transported from one place to the another, and they will result into the formation of a cloud, and this cloud, as a result of the condensation, they release the latent heat that they have absorbed and which will bring a weather change. This point is clear. So we will have a complete discussion about how this phenomena is taking place in a climatology. Okay, how the energy exchange is taking place and all the circulation over to our earth. Circulation is not only a phenomena of atmosphere, always remember, the circulation is a phenomena of all the realms. Even the lithosphere is having its own circulation pattern.
okay, because you know that the older plate may get subducted, which may get melted. Is it clear? And then it may come out in the form of a volcanic eruption. So there is a circulation of a matter in the lithosphere also. There is a circulation of a matter in our atmosphere also. There is a circulation of a matter in the biosphere also. And these circulation do not mean that these circulation would be taking place in isolation with the other realms. All the realms are interdependent, and this interdependency creates a circulation of the matter. Okay, because in our atmosphere also we have an element of lithosphere. All the dust, aerosols that we have, they are the elements of lithosphere. The atmosphere also has an element of hydrosphere in the form of water vapor, clouds. They all are the elements of what? Hydrosphere. And even the hydrosphere is also having an element of atmosphere, because the gases which are dissolved into the water, they are the elements of atmosphere. And even the hydrosphere is also having some suspended particles of rocks. Okay, they all are the elements of lithosphere. And hydrosphere is also having a region of flourishing life. They all are the part of biosphere. Okay, even in the biosphere also we have elements of gases, we have elements of atmosphere, we have elements of lithosphere, because all the nutrients that we receive, all the nutrients that we are receiving are the elements of lithosphere. This point is clear? This point is clear to all? बेटा clear हुआ? कोई doubt? Okay. लिखिएगा एनर्जी एक्सचेंज क्या लिखा आप लोगों ने पॉइंट? बिटवीन, हाँ हाँ लिखिएगा, दिस एनर्जी एक्सचेंज causes a phenomena or a effect known as weather, known as weather. Known as a weather. This point is clear? Known as a weather. Okay. Now write down the fourth one. Third one, hydrosphere. Okay, it is a dynamic mass. Dynamic mass which is continuously on move. Evaporating from the ocean, to the atmosphere, comma, precipitating back to the land, and running back to the ocean, Okay, so it is a mass of the water which is always on move. And how it moves? It will evaporate. Okay, it will evaporate by the solar radiation, and then it will go into the atmosphere, and from the atmosphere it will be condensed in the form of a clouds. Clouds will bring a rain, and these rain will go back to the ocean. Okay, or they may be falling on the land, and through the rivers and various channels, they will go back again into the the reservoir of the water, or they will go back again into the ocean. Okay, now always remember that not all the water will go back to the ocean. Some of the water may get absorbed as a soil moisture, some of the water may get absorbed in the biosphere. Okay, because all the plants and animals also going to absorb the water. So some of the water may get absorbed, some of the water may get logged in the form of ice sheets,
or in the form of a glacier, some of the water may get locked. Is it clear? And they will enter into a long term cycle. Okay, some of the water may enter into the short term cycle. A short term cycle means that the water within a certain time, within a short period of a time, water will go back to the ocean. Okay, but there are some water which will enter into a long term cycle, and this water includes the water which is absorbed by the biological beings, okay, by the biosphere, or the water which is a part of soil, or a water which is a part of underground water reservoir, underground reservoir that we have, or the water that is locked into the ice sheets. Okay, so they will enter into a long term cycle, and eventually in a long term cycle. Long term does not mean that it will take millions of years. Okay, this water will also go into the ocean. Okay, so this ocean is a reservoir of water, and this water keeps on moving from one realm to the another realm in a different by the change of its state. And whenever the water changes its state, you know that whenever the water changes the state, what will happen? There will be an absorption of the heat, or there will be a release of the heat. Okay, you know that if the water is going to absorb, okay, the heat, then it will evaporate. So evaporation will result into heating or cooling. Evaporation will result into cooling. हाँ, अरे हाथ पे थोड़ा सा तुम वो लगा के देखो, सैनिटाइजर लगा के देखो, तुम ठंडा ठंडा लगता नहीं लगता? ओके, अब पानी जब हाथ पे रख देते हो तो हाथ ठंडा क्यों लगने लगता है आपको? कभी सोचा है आपने? पानी लगाने पे ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि बेटा आपके हाथ से हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर इवेपोरेट होने लगता है ना? वाटर क्या करता है? इवेपोरेट होने लगता है। तो जब इवेपोरेशन विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू कूलिंग, और यही वाटर जब कंडेंस होगा तो क्या करेगा? जो उसने हीट एब्जॉर्ब करी थी उसको रिलीज कर। ओके, सो द कंडेंसेशन will result into the release of latent heat. A latent heat will be released, and which will result into the warming of the atmosphere. Point is clear? Okay, which will result into the warming of the atmosphere, and this is how the exchange of the heat is taking place. Okay, the exchange of the heat is taking place. This point is clear? You know that the heat transfer through three different ways. What are the mode of transfer of the heat? How the heat is transferred? Conduction, convection, and radiation. So the heat from the sun reaches to the earth by the process of radiation. And what is the importance of a radiation? Radiation do not requires any medium. Okay, in the solids, the conduction would be the prominent process of the heat transfer, and in the liquid and the gases, what is going to be that is a convection. This point is clear? Is it clear? So this is how the heat is absorbed at one place, okay, and is released at the another place. And by this phenomena of heat exchange, we have the phenomena of circulation. Okay, and this circulation causes a weather changes. This circulation causes a weather changes. Is it clear? बोलो बोलो. इवेपोरेशन जहां पे, हाँ हाँ, मतलब that will result into a condensation. क्या बोलो बोलो. वो तो एक पूरा प्रोसेस है कि that how the high pressure and the low pressure tend to form. If we have a low pressure at the surface, then there will be a high pressure at above. अरे बेटा नीचे अगर लो प्रेशर होगा तो ऊपर तो हाई प्रेशर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जो भी लो प्रेशर के एरियाज होंगे वहां पे कन्वर्जेंस होगा, जो हाई प्रेशर के एरियाज होंगे वहां पे डाइवर्जेंस होगा। अब ये जो डाइवर्ज हुआ है कहीं ना कहीं तो बैठेगा ही ना, जहां वो बैठेगा, जहां पे डिसेंड करेगा वहां पे हाई प्रेशर बना देगा, वहां पे हाई, कुछ जरूरी नहीं है कि वो वहां पे रिलीज करेगा। ओके, अगर वो बैठ रहा है तो बाय कंप्रेशन वो हीटअप हो जाएगा,
बाय कंप्रेशन वो हीट अप हो जाएगा, एंड बाय कंप्रेशन के कारण, हीट अप होने के कारण कोई जरूरी नहीं है कि इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू द कंडेंसेशन. ओके, कंडेंसेशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन द एयर रीचेस टू इट्स ड्यू पॉइंट. ओके, कंडेंसेशन तभी होगा जब एयर अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंचेगी. जब तक वो ड्यू पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी तब तक कंडेंसेशन नहीं होगा. इज इट क्लियर? राजस्थान में खूब सारा ये डेजर्ट एरिया जो है हमारा, थार डेजर्ट का, यहाँ पे खूब वाटर वेपर है, लेकिन बारिश तो नहीं होती. वाटर वेपर कंटेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है ड्यू पॉइंट की. ओके, प्रॉब्लम है क्या? ड्यू पॉइंट की. मानसून में मैं आपको समझाऊंगा, या बीच में क्लाइमेटोलॉजी में ही आपको समझा दूंगा कि व्हाई द डेजर्ट्स आर ड्राई. ओके, व्हाई देयर इज नो रेनफॉल इन द डेजर्ट्स. डेजर्ट रीजन्स के अंदर में रेनफॉल क्यों नहीं हो, और राजस्थान में डेजर्ट प्रॉब्लम क्या है. ओके, जनरली तो हम यही बता दिया जाता है ना क्लास के अंदर में कि भाई जो मानसूनल विंड्स होती हैं, दे गोस पैरेलल टू द अरावली and therefore it do not brings a rainfall. This is not a major reason actually. We have a complete flow of the air from the Gujarat to the entire Thar region. Okay, but still it do not brings a rainfall. Okay, rainfall होने के लिए और condensation होने के लिए कुछ ideal conditions हो. जब तक वो ideal conditions match नहीं करेंगी तब तक ना condensation होगा ना ही rainfall. और मैं आपको फिर बता रहा हूं, कंडेंसेशन क्लाउड होने से ही रेनफॉल की गारंटी नहीं मिलती है कि क्लाउड बन गया तो आपको रेनफॉल हो जाएगी. ये भी कोई जरूरी नहीं. नहीं, क्लाउड बना है तो मॉइस्चर तो होगा ही. और क्लाउड में क्या है? क्लाउड में और क्या है बेटा? क्लाउड इज एन एग्रीगेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स और बोथ फ्लोटिंग इन द स्काई. क्लाउड की तो डेफिनेशन ही यही है ना. तो क्लाउड होने का मतलब ये नहीं है कि बारिश हो जाएगी. ओके, उसके लिए भी कुछ आइडियल कंडीशन. इज इट क्लियर? तो मैं जो तुम पूछ रहे हो ना बेटा, वो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर में आता है. थोड़ा सा वेट करो, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में तुम्हें समझ में आ जाए. ओके, तो दिस पॉइंट इज क्लियर दैट हाउ द एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड दैट कॉजेज अ वेदर. ओके, हाइड्रोस्फीयर के अंदर में क्या लिखा आपने? रनिंग बैक टू द ओशन अगेन. ओके, लिखिएगा इट इंक्लूड्स वाटर इन द ओशन, clouds, streams, lakes, glaciers, soil, moisture, and underground water. And underground water. And underground water. ओके, आगे लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, बायोस्फीयर है बेटा. चलो, अब ये बगैर समझे नहीं चलेगा ना आगे, है ना. अभी तुम बगैर समझे आगे नहीं जाओगे. हैं बेटा, जहां से हीट को एब्जॉर्ब किया गया, इवेपोरेशन. हाँ हाँ बोलो. इवेपोरेशन बेटा, इवेपोरेशन होने के लिए हीट की जरूरत है. तो हीट कहां से आएगी? अरे सन से नहीं आएगी, सरफेस से आएगी. इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. आप इवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस समझते हैं क्या? हाँ ठीक है, चलो आप कह सकते हो. और इवेपोरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. ठीक है, अगर तुमने एक गिलास पानी यहाँ पे छोड़ दिया, कल को आके उतना ही पानी नहीं मिलेगा. ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ पानी हमारे एटमॉस्फेयर में चला. ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? उसके दो रीजन हो सकते हैं. एक तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है. ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है कि पंखा चल रहा है तो जो हवा है उसने अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लग कर लिया.
ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जब वाटर का टेम्परेचर जो होता है, ओके, जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, and as a result of this state of the motion they will leave the water surface. Is it clear? Now what will happen when they are leaving the water surface? They will absorb the energy from the water, and when they are going to absorb the energy from the water, what will happen? They will lower down the temperature of the surface. So every evaporation will take place, okay, when the heat is absorbed from the surface, and as a result there will be a cooling. ठीक है। और जब कंडेंसेशन होगा, इवेपोरेशन में तो होगा, अगर इवेपोरेशन होगा तो कंडेंसेशन कूलिंग होगी ही होगी। कोई तुम मुझे ऐसा रीजन बताओ कि जिसमें इवेपोरेशन होगा कूलिंग नहीं होगी। बोलो 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 बेटा। आपका जब पसीना आ जाता है, और आप पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो क्या होता है? कूलिंग फील होता नहीं होता? हवा चल रही होती है तो कूलिंग फील होता नहीं होता? ठीक है। ये पसीना जब इवेपोरेट हो जाता है, ओके, बॉडी से जब इवेपोरेट हो जाता है तो आपको कूलिंग क्यों फील होती है? इवेपोरेशन, मैं राजस्थान के इवेपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे जनरल फॉर्मूला, जनरल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बता रहा हूं मैं आपको। ओके। अब वाटर, मैंने आपसे कहा कि राजस्थान की इवेपोरेशन की बात नहीं करी, मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में वाटर वेपर्स जो हैं, मतलब ये जो थार डेजर्ट का एरिया है वहां पे वाटर वेपर की कमी नहीं है, वाटर वेपर बहुत है, लेकिन कंडेंसेशन नहीं हो पाता। ठीक है। कंडेंसेशन होने के लिए कुछ आइडियल कंडीशंस, ठीक है। थार डेजर्ट के अंदर में, यस, चलो ये ले लिया हमने, और ये हमारा रीजन ऑफ द थार है। ओके। अब तुम जब मानसूनल विंड्स होती हैं, एक तो ये हमारा वेस्टर्न घाट का एरिया आ गया, मानसूनल विंड्स जो होती हैं जो अरेबियन सी साइड से आती हैं, ओके, और एक मानसूनल विंड्स हमारी किधर की तरफ से एंटर करती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये जो मानसूनल विंड्स हैं दे एंटर इनटू दिस रीजन and they crosses this region and reaches to this particular place, and as they are coming from Arabian Sea they may be having a sufficient quantity of water vapor, okay, sufficient quantity of the water vapor। लेकिन वाटर वेपर होना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी जो आइडियल कंडीशंस होती हैं वो मीट आउट होनी। और यहाँ पे एक हम चीज बोलते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा होता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना हमारे एटमॉस्फेयर की वो भी ज्यादा। ओके। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो तुमने एक ठंडे पानी के अंदर में चीनी को डिसॉल्व करने की कोशिश, ओके, तो चीनी डिसॉल्व होगी? अरे कभी अगर घर में लेमनेट बनाते हो जिसको शिकंजी कहते हैं, ओके, अगर आपने चीनी पहले डिसॉल्व करके फिर आइस डाला है फिर तो आसान हो जाएगा, लेकिन पहले तुमने आइस डाल दिया फिर चीनी डालने लगे तो फिर डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। अब तुम्हें अगर मान लो सपोज करो एक कप तुम्हारे पास चाय है और तुम्हें आदत है कि भाई ज़्यादा मीठी चाय पीने का शौक है, तुमने उसमें एक चीनी डिसॉल्व कर दी, 1 चम्मच डिसॉल्व हो गई, 2 चम्मच डिसॉल्व हो गई, 3 चम्मच डिसॉल्व हो गई, ओके, लेकिन जब तुम चौथी को डिसॉल्व करो तो वो डिसॉल्व नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई। बेटा मेरी बात को समझ लो पूरे, ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट पे। अब तुम चाहते हो नहीं मुझे तो और करनी है, तो क्या करोगे? तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो और डिसॉल्व हो जाएगी, और तुम चाहते हो कम करना है तो टेम्परेचर कम कर दो। तो इसी तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है कि भी एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, ओके। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, और जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसेशन होने के लिए क्या जरूरी है कि वाटर वेपर्स जो हों वो कंडेंस हो सके, लेकिन वाटर वेपर तभी कंडेंस होगा जब टेम्परेचर कम होगा।
अदरवाइज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी वो कम रहेगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कभी रहेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। दूसरा एक और फिनोमेना राजस्थान के अंदर में प्रिवेल करता है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, जिसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का केस ये होता है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के केस के अंदर में, कि नीचे की लेयर जो होती है वो कोल्ड होती है और ऊपर की लेयर जो होती है वो वार्म होती है। यू गॉट दिस पॉइंट? नीचे की लेयर कोल्ड होती है और ऊपर की लेयर क्या होती है? वार्म होती है। और जब कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी कंडीशन बन जाती है तो जो कोल्ड एयर होगी वो कभी भी राइज नहीं करेगी। हमेशा राइजिंग तभी होगा जब नीचे की एयर वार्म होगी और ऊपर की एयर कोल्ड होगी, या फिर फोर्स राइजिंग हो, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू राइजिंग हो। जब नीचे की एयर वार्म होगी तभी वो हल्की होगी और वो ऊपर की ओर राइज करेगी। इज इट क्लियर? और जब ये राइज करेगी तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ठंडी होती जाएगी। इज इट क्लियर? और जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी तो वो अपने कंडेंसेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तो बोलेंगे हम ड्यू पॉइंट। इज इट क्लियर? तो राजस्थान में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की कंडीशंस क्यों बन जाती हैं? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ओके, पहली बात तो यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन। ओके, तो हाई प्रेशर रीजंस बनने की वजह से एयर जो होती है वो डिसेंड करती है। एयर डिसेंड करती है, जब एयर डिसेंड करती है तो ऊपर का एरिया जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, और जब भी कभी किसी चीज को एयर को कंप्रेस करोगे तो वो वार्म हो जाती है, और एयर को कभी भी एक्सपेंड करोगे तो वो ठंडी हो जाती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड टू बी एज एडियाबैटिक प्रोसेस। साइकिल चलाई है? साइकिल नहीं चलाई? चलाई है। तो उसमें हवा भरी है पंप से, तो जब तुम बैरल को नीचे प्रेस करते हो तो बैरल गर्म हो जाता है, एयर जो होती है वो गर्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ बदमाशी करनी हो, उसकी हवा निकालनी हो, ठीक है, अगर उसकी हवा निकालनी होती है तो जो नोजल में से हवा आ रही होती है वो ठंडी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नोजल से हवा आती है तो एक्सपेंड कर जाती है। ओके, और जब कंप्रेस करते हैं तो एयर कंप्रेस होने की वजह से क्या होती है? गर्म हो जाती है। तो इसलिए राजस्थान के जो रीजन्स है ना, राजस्थान के जो रीजन्स होते हैं वहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस प्रिवेल करती हैं अपर एयर के अंदर, जिसकी वजह से देयर इज अ डिसेंडिंग ऑफ द विंड्स। विंड्स के डिसेंड करती विंड्स डिसेंड करती है तो ऊपर ऐसा होता है, जब कंप्रेशन का प्रोसेस ऑपरेट कर रहा होता है तो ऊपर की एयर जो होती है वो ज्यादा कंप्रेस हो जाती है और नीचे की एयर जो होती है वो रिलेटिवली कम कंप्रेस। तो ऊपर वाला टेम्परेचर जो होता है वो T1 मान लो, नीचे का T2 मान लो, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो नीचे की एयर ठंडी है, ऊपर की एयर क्या है? वार्म है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? एयर नीचे की ऊपर की ओर राइज दी। दिस पॉइंट इज क्लियर? तीसरा रीजन यहाँ पे ये होता है, मैंने अभी तुम्हें बता दिया, लेकिन ये मुझे अलग से पूरा एक टॉपिक है, राजस्थान डेजर्ट प्रॉब्लम। ओके, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट प्रॉब्लम पूरा एक अलग टॉपिक ही है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले ये जरूरी था कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ ले। ओके, ये जरूरी था, लेकिन तुमने यही समझने की कोशिश कर रहे हो। चलो मैं बता देता हूं कि एक और कंडीशन होती है कि राजस्थान के अंदर में डस्ट बहुत है। ठीक है, जो डस्ट होती है, और ये डस्ट के दो सोर्स हैं, एक तो डेजर्ट खुद अपने आप में सोर्स है, और दूसरा अरेबियन पेनिसुला से बहुत डस्ट आती है। ओके, वेस्टर्लीज के थ्रू, वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं उनके थ्रू बहुत ज्यादा डस्ट है एंटर करती है हमारे राजस्थान, और ये पूरे इस बलूचिस्तान और ये राजस्थान से ये जो रीजन्स हैं इनके अंदर में काफी ज्यादा डस्ट एंटर करती है। अब डस्ट क्या होते हैं? एरोसॉल्स होते हैं। ये एरोसॉल्स अगर कहीं पे भी किसी भी जगह पे आ जाएंगे तो सनलाइट को ब्लॉक कर देंगे। जब सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो नीचे की एयर ठंडी हो जाएगी और ऊपर की एयर क्या हो जाएगी? गर्म रहेगी। इसकी वजह से नेट कूलिंग हो जाएगा। नेट कूलिंग होने की वजह से क्या होगा? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा? एयर राइजिंग। और ये एरोसॉल्स जो होंगे ना, अंदर ही अंदर ट्रैप बने रहे। समझे? तो वाटर वेपर का होना केवल कंडेंसेशन, ये कोई जरूरी नहीं कि वाटर वेपर है तो वहां पे सहारा में बहुत सारा वाटर वेपर होता है। रात के टाइम में सारा ड्यू कलेक्शन होता है। इसराइल के अंदर में आप देखो, वहां पे तो ड्यू एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ड्यू इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर इन मेनी इन द रीजन्स ऑफ द इजराइल। इजराइल के अंदर में तो पूरा ड्यू हार्वेस्टिंग की जाती है। समझे? ओके,
बहुत सारे हमारे ऐसे डेजर्ट एरियाज हैं, जो कोल्ड डेजर्ट एरियाज हैं, वो रिलेटिवली ड्राई है, वहां पे वाटर वेपर कंटेंट कम होता है, और जो भी प्रेसिपिटेशन होता है वहां पे वो ज्यादातर किसकी फॉर्म में होता है? स्नो की फॉर्म। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? तुम बताओ। ओके तो बेटा इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हो। एक ड्यू पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ड्यू पॉइंट क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ओके ड्यू पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट कैसा होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर, पूरी क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको मॉइस्चर का मीनिंग ढंग से समझ में आ गया, मॉइस्चर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, मॉइस्चर का ट्रांसफर कैसे होता है, तो आपको समझ में आ गया, तो पूरे क्लाइमेटोलॉजी के डायनेमिक्स जो होंगे वो आपको क्लियर हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके और कोई डाउट बेटा? But not always necessary that there will be a low pressure and high pressure condition. There are other factors also which may result into a temperature inversion. And whenever a condition of a temperature inversion take place, it do not allow the vertical movement of the air. अब चलो तुम पूछ रहे हो बेटा, देखो है क्या, एक हम कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ये पढ़ा है आप लोगों ने? नॉर्मल लैप्स रेट से कितना होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ओके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो, सपोज करो यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री है सरफेस पे, तो 1 किलोमीटर की हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। तो दैट विल बी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और फर्दर हम 1 किलोमीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच जाते हैं, तो कितना कम हो जाएगा? दैट विल बी 17 ना, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दैट विल बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम जाते हैं 3 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं, तो दैट विल बी 11.5 नहीं 23.5 माइनस 6.5 17 ही होगा, ठीक है। और जो होगा 17 में से 6.5 कम करेंगे तो दैट विल बी 10.5 डिग्री से। तो इस तरीके से आप कम करते जाओगे। अब देखो एयर जब नीचे से ऊपर की ओर राइज करेगी, जो एयर का टेम्परेचर मान लो सपोज करो 30 डिग्री है, मान लो ये एयर पार्सल है, ये ऊपर की ओर इट इज राइजिंग, तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जब एयर का टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वो अल्टीमेटली अपने ड्यू पॉइंट पे पहुंच, और जब एयर ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। अब इसका मतलब एयर जो होगी वो और वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती। जब वो होल्ड नहीं कर सकती तो क्या करेगी? क्लाउड फॉर्मेशन कर देगी। यही क्लाउड को कहते हैं हम कंडेंसेशन। दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ कंडेंसेशन। तो क्लाउड बना देगी, ये क्लाउड होते हैं। बट क्लाउड्स होना ये डिटरमाइन नहीं करता। क्लाउड इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ प्रेसिपिटेशन। अब क्लाउड में से जो ये वाटर वेपर रिलीज होंगे इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है, रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, हेल की फॉर्म में भी हो सकता है, स्लीट की फॉर्म में भी हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म के अंदर में। इस कमरे के अंदर में वाटर वेपर है, अगर तुम्हें पता करना हो तो कैसे पता करोगे? बिल्कुल सही, ठंडे पानी की बोतल रख दो, उसके चारों ओर बूंदे आ जाएंगी। वो कहां से आई? कहां से आई भाई? अरे तुम्हारे कमरे का जो वाटर वेपर था वो कंडेंस हो गया वो ठंडे के चारों ओर, तो ठंडा होने पे ही कंडेंसेशन होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके अब ये डिपेंड करता है कि हर एयर का अपना एक कंडेंसेशन टेम्परेचर हो। जिस एयर में वाटर वेपर ज्यादा होते हैं उसका कंडेंसेशन टेम्परेचर कम होता है, और जिस एयर के अंदर में वाटर वेपर बहुत कम होते हैं उसका कंडेंसेशन टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? वो बहुत कम होता है, मतलब वो माइनस में चला जाता है।
ओके अब मान लो सपोज करो कि कोई एक एयर का पार्सल है, एयर पार्सल है, ओके उसमें 10 ग्राम वाटर वेपर है, 10 ग्राम वाटर वेपर है, और कोई एक एयर पार्सल है, मान लो दोनों एक एयर पार्सल है जिसमें केवल 1 ग्राम वाटर वेपर है, और सपोज करो दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी 30 डिग्री। अब दोनों में से 1 ग्राम वाटर को निकालना है, आपको कंडेंसेशन कराना है, तो इसको कंडेंस करने के लिए बेटा हो सकता है आपको -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ जाए, ओके और इसको कंडेंस करने के लिए हो सकता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कंडेंसेशन, और इसी को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। समझे? क्लियर हो गया सबको? ओके चलिए तो क्या लिखा? बायोस्फीयर लिखिएगा आप लोग। इट इंक्लूड्स ऑल लाइफ फॉर्म्स, इट इंक्लूड्स ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ ओके अर्थ का मतलब केवल जियोस्फीयर नहीं है, ऑन अर्थ का मतलब ओशन में भी, लैंड पर भी, ऑन अर्थ, इन ओशंस, लैंड एंड एटमॉस्फेयर। देखिएगा these life forms utilizes these life forms utilizes these life forms utilizes gases from atmosphere, water from hydrosphere, and nutrients from lithosphere, and nutrients from lithosphere. Okay? This point is clear? Now write down the heading Earth system. Earth system. देखिएगा various realms of Earth interacts in a complex way, known as Earth system. Okay, known as Earth system. आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ सिस्टम is an interacting and interdependent integrated whole of many subsystem okay of many subsystem. okay देखिएगा अर्थ itself is a subsystem of
Earth itself is a subsystem of solar system. Okay, solar system, comma. Solar system is a subsystem of यूनिवर्स. अगर बीच में ऐड करना चाहो तो गैलेक्सी डाल सकते हो, गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स डाल सकते हो, है ना. इज अ सब सिस्टम ऑफ अ यूनिवर्स. दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके. अब बेटा एक चीज मुझे बताओ कि कोई भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम को, सिस्टम में मैटर का मूवमेंट ऑफ द मैटर मूवमेंट requires what? Requires what? Energy. It requires energy. Point is clear. And what is the source of energy for Earth? Sun. Write down this point. देखिएगा, system is driven by a source of energy. System is driven by a source of energy which moves matter and energy from one place to the other. Matter and energy from one place to the other. Matter and energy from one place to the other. Before the, yes, matters were moving. So they were dark energy. You may have heard about the dark energy. Even the Big Bang explosion itself is a source of great energy which is still expanding the universe. Okay? And energy can be converted into a mass, and mass can be converted into energy. Einstein equals to mc square. Okay? So for a Earth, okay, initially the formation of the Earth took place from a nebular cloud, a dust of gases. Okay, and later on with the formation of a sun, okay, with the formation of a sun, the sun becomes to be an important source of energy for the Earth as a system. And as a result of this source of energy, we have a matter moving from one place to the other. Always remember that sun is not the only source of energy for our Earth system. We have a gravity also, which plays an important role in terms of the movement of a matter from one place to the other. Okay, rotation of the Earth is also an important source of circulation of a matter from one place to the another. But these two sources are having a very limited role to play. Nearly 95% to 99% of the source of the energy in terms of the movement of the matter and in terms of the movement of the matter is dependent upon to the energy received from the sun. Even the internal heat of the Earth is also a source of energy which can result into the movement of the matter from one place to the other. Point is clear? बोलो. चलो आगे लिखो. आगे लिखिएगा. For Earth, sun is a main source of energy along with gravity, internal heat, and
along with gravity, internal heat and rotation. Along with gravity, internal heat or rotation. Is it clear? अब लिखिएगा a system, लिखिएगा a system can be either open or closed. A system can be either open or closed. System को हम दो पार्ट में ले लेते हैं. System can be either open or closed system. Closed system. System can be either open or a closed system. लिखिएगा in open system, both energy and matter is exchanged from the surrounding. Okay, in an open system, both energy and matter can be exchanged from the surrounding. Okay, देखिएगा in a closed system, only energy is exchanged. Only energy is exchanged and matter circulates within the system. Matter circulates within the system. Matter circulates within the system. This point is clear? Point is clear? Okay, this point is clear. Suppose we take a river. If we take a river, okay, हमने एक river की बात करी. If we take a river and we take a boundary around the river, okay, around the river, then the water is coming through precipitation. Through the precipitation, the water is coming, so which is adding up the matter, and by the gravity it is going out, by the kinetic energy. By the kinetic energy or the gravity that it is, the energy would be in the form of kinetic energy or in terms of a movement of the water. So you can see that matter is coming in and going out. Matter is coming in and going out from the river system. Is it clear? Suppose we take a river and we create a boundary around the river. So what is there? Is the river is a closed system or an open system? No, it is an open system. Because matter is entering into the river and also coming out from the river. It is entering into the ocean. Okay. Now this is an ocean. Suppose we take it to be as an ocean. And this is we are taking in terms of precipitation. Is it clear? Now suppose, for example, if we take a boundary here and we take a complete hydrological cycle. A complete hydrological cycle. So in this case, what will happen? The water will be evaporated from the ocean and it will be precipitated over the rivers or over the mountains, and later on it will enter into the river. So in this case, what type of a system it is? It is a closed system, because no extra matter is neither coming in nor going out. The matter is just circulating within the system. So how to identify a system is a closed or an open one? If a matter is coming in and going out from a certain system, then it is an open system. Our body is an open system. Is it clear? But our earth is a closed system. Okay, whatever the matter that we have in the earth, that keeps on circulating from one realm to the another, but do not leaves the earth. Very minuscule amount of the matter, may enter into the outer space. Or I must say that very minuscule amount of the matter will enter into the earth system in the form of meteor and all that. That is negligible. That is a negligible amount of the matter is coming from the outer space and going to the outer space from the earth.
Okay, so most of the matter is getting circulated within the earth, within the earth system. So that is why it is a closed system. Is it clear? So बेटा, और एनर्जी कहां से आती है? सन से एनर्जी आ रही है, तो जितनी हम सन से एनर्जी लेते हैं उतनी एनर्जी वापस भी कर देते हैं. अगर हम नहीं वापस करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, नहीं बढ़ता रहेगा? And we maintain a certain temperature, and that is why the earth is a habitable planet. If we keep on absorbing the energy and do not release the energy, what will happen? The temperature of the earth will increase to such a degree that it is not practically possible for any life to sustain over to the earth. Is it clear? तो हम इसी को बोलते हैं heat budget. You may have heard about this term, heat budget. Okay, heat budget. अगर हीट बजट हमारा नेगेटिव में चला जाता है, पॉजिटिव में चला जाता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है. हमारा इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दोनों का बैलेंस देखते हैं. अगर इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर हमारा ज़्यादा है और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हमारा कम है, तो इट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर. और हमारा आउटगोइंग ज़्यादा है और इनकमिंग कम है, इट विल रिजल्ट इनटू. अब मुझे बताओ, राजस्थान के अंदर में एरोसॉल्स अगर आ जाएंगे तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम हो जाएगा और आउटगोइंग ज्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? कूलिंग होगा. और क्लियर स्काई होंगे, तो जब स्काई क्लियर होंगे तो आसानी से रेडिएशन बाहर चला जाएगा. अगर क्लाउड होगा तो रेडिएशन को रोक लेगा, लेकिन आसानी से रेडिएशन बाहर चला जाएगा. पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? ओके, सो the point is, it is very important that you understand that we take only the energy from the outer space. Okay, and our matter is getting circulated among various realms, various yams, or they are utilized into a various subsystem process, and all the subsystem process combines to form a earth system. We take a hydrological cycle, okay, we take a carbon cycle, we take a nitrogen cycle. This is a complete circulation. Is it taking place or not? It is a complete circulation. Carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, hydrogen cycle, oxygen cycle, they all are taking place. Okay, is it clear? And every systems means it may be possible that some system may have a components of all the four realms, and some systems may not be having a single one. But it is our earth which makes all the system to operate in an integrated manner, and we combine them, that is called to be as a earth system. So earth behaves like a system. अब system की खासियत क्या होती है? The importance of the system is that if one subsystem is not operating efficiently, then it will result into a problem into the another subsystem. Or if there are changes in one system, then it will result into a changes into the another system, so that a new equilibrium may get established. And this is called to be as a feedback process. Our systems, every system operates through the process of feedback. So any changes will take place, will trigger the feedback, and this feedback will create a new type of equilibrium. So every system is always in a state of dynamic equilibrium. Are you getting my point? मेरी बात समझ में आई आपको? अब लिखो भाई साहब. ओके, लिखिएगा. 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 अ रिवर सिस्टम receives a water in the form of precipitation, and it releases the water into the ocean. Here the matter
enters into the system and then leaves the system. Leaves the system. Leaves मतलब छोड़ देना. Leaves the system. Stop. देखिएगा. If we take a complete hydrological cycle, which includes precipitation from the ocean, which includes precipitation from the ocean, which includes precipitation from the ocean, which includes evaporation from the ocean, which includes evaporation from the ocean and precipitation on land, then it will be considered as closed system. Okay? It will be considered as a closed system. देखिएगा, Earth is a closed system. Earth is a closed system. Earth is a closed system. As minuscule or very minute. Earth is a closed system as very minute or negligible quantity of the matter leaves or enter the earth. Enter the earth system. Okay? देखिएगा, the matter circulates. Okay, बेटा? The matter circulates within the system. The matter circulates within the system. The matter circulates within the system. Is clear? अब मैंने आपको क्या बताया? फीडबैक. हमारी बॉडी का भी कोई फीडबैक प्रोसेस है. जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो पूरी बॉडी के अंदर में ट्रिगर हो जाता है कोई फीडबैक. क्या होता है? स्वेटिंग होने लगती है. स्वेटिंग इवेपोरेट होती है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है? इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस. दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ होम्योस्टेसिस, दैट एवरी सिस्टम हैज अ मैकेनिज्म of maintaining a stable equation or maintaining a certain state of equilibrium. So whenever any state of the equilibrium is disturbed, then it triggers a feedback, and this feedback try to restore the equilibrium into the system. Sometimes you may get the same equilibrium state, and sometimes what happen, a new equilibrium state may get achieved. Okay? Now for example, ये फीडबैक को समझो तुम लोग इस चीज को. इफ देर विल बी मोर एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इनटू मोर ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. ये तो सबको पता है ना. अभी तो टॉक ऑफ द टाउन है यार. इसमें तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल बेसिक से बात है, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, दैट विल रिजल्ट इनटू more that is especially carbon dioxide, or by the emission of through the burning of the fossil fuel, they will result into more greenhouse gases, and these greenhouse gases will absorb the terrestrial radiation. They have a potential of absorbing more terrestrial radiation, and as a result what will happen?
So that will result into the increase in the temperature, or that may contributes into the global warming. So what will happen if the global warming will take place? The temperature of the other systems will also start increasing. The temperature of the other system will also start increasing, and ocean, because we have a major part of the earth covered by the ocean, and ocean tend to absorb the heat, because you know that ocean behaves like a heat sponge. So when they will start absorbing the heat, okay, the temperature of the oceans may get increased. The temperature of the ocean, if the temperature of the ocean may get increased, okay, then what will happen? It will result into the melting of polar ices. And if this polar ice will melt, then a new fresh water will enter into the system. This fresh water will raise the sea level, and the raise of the sea level will result into the flooding of the coastal region. Okay, flooding of the coastal. And also the increase in the temperature will result into more instances of more cases of tropical cyclones, or extreme weather events will be observed with this change in the temperature. This point is clear? This point is clear? This point is clear? Okay, अब देखो है क्या कि जब पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर जाएंगी तो क्या होगा? अगर मान लो अंटार्कटिका का आइस मेल्ट हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा अंटार्कटिका पे? फिर फॉसिल फ्यूल नहीं, यहां पे एक आइस, अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, ये तो सबको पता है ना। अंटार्कटिका के अगर ऊपर की आइस मेल्ट हो जाती है तो नीचे का कॉन्टिनेंट वाला पार्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? लैंड वाला पार्ट सरफेस पे आ जाएगा। अब देखो, अब है क्या कि अगर हम किसी सरफेस पे आइस है, वहां पे आइस है, तो जो सोलर रेडिएशन आता है, द सोलर रेडिएशन विल गेट रिफ्लेक्टेड, so it is not absorbed by the ice. This is called albedo. Albedo कहा जाता है. But if this ice is melted, what will happen? It will be replaced by a simple brown surface. There will be a brown surface, and this brown surface will absorb more radiation, and as a result it will release terrestrial radiation, and then it will contribute into the global warming, because more radiating surfaces will be created. More radiating surfaces will be created, and if we have a more radiating surfaces, then it will result into more increase into the temperature. नहीं समझ में आया? बेटा सिटी टेम्परेचर जो होता है वो रूरल एरिया के टेम्परेचर से ज्यादा क्यों होता है? यस, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो है क्या, अब देखो मान लो कहीं पे एक बिल्डिंग बना दी आपने। अब ये बिल्डिंग, पहले अगर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई होती तो केवल इतना ही सरफेस हीट को रेडिएट करता। अब तुमने बिल्डिंग बना दी तो ये एक सरफेस हीट को रेडिएट कर रहा है, ये एक सरफेस हीट को रेडिएट कर रहा है, ये कर रहा है बैक साइड, 4 सरफेस तुमने जनरेट कर दी एक छोटी सी जगह। तो ज्यादा रेडिएटिंग सरफेस बन गए, नहीं बन गए? तो पहली बात तो हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा रेडिएशन जाएगा, and it will result into a creation of a heat dome around the city area. That is why the city areas are called to be as a heat islands. Okay, this point is clear. अब अगर मान लो पोलर आइस कैप्स में मेल्ट कर जाती हैं तो it will result into more absorption of solar radiation, and more absorption means re-radiation will result into more global warming. So जब कभी भी फीडबैक ऐसा हो जो ट्रिगर कर देता है, विच में इनहैंस द चेंज, जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग ने फीडबैक को ट्रिगर करा लेकिन उस फीडबैक ने ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा दिया, then it is called to be as a different type of a feedback, that is called to be as a positive feedback. और जब फीडबैक क्या करता है, जब फीडबैक चेंज को सप्रेस करता है, then it is called to be as a negative feedback. पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब अच्छे और बुरे से नहीं है, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब अच्छे और बुरे से नहीं, डोंट कोरिलेट इट विद गुड और बैड। राइट डाउन, देखिएगा। अब तुम मुझे बताओ, पसीना आना, जो स्वेटिंग होती है, वो पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज द चेंज विच ट्रिगर्स अ सर्टेन फीडबैक
is now resisting the change. It is reducing the temperature. Temperature increase ने sweating लाया, अब sweating ने temperature को कम कर दिया, तो it is a negative feedback. अब देखो यही जो मैंने आपको बताया इसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक लूप्स में ऑपरेट. नाउ सपोज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी मोर क्लाउडीनेस. So if there will be more cloudiness, it will block the solar radiation. It will result into cooling. So it will lower down the temperature. So it is going to be a negative feedback. So different types of the feedback loops may operate. Okay, and a different changes. A certain change may trigger a positive feedback or may also trigger a negative feedback. You got this point? जैसे फॉरेस्ट जो होते हैं वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं. कैसे वर्क करते हैं? बिकॉज बाय द प्रोसेस ऑफ evapotranspiration देयर विल बी मोर मॉइस्चर ओवर द फॉरेस्ट एरियाज. ओके, एंड इट विल रिजल्ट इनटू मोर रेनफॉल and more rainfall will result into more forest. Okay, so this is a positive feedback which is operating. Why? Because the forest has enhanced the rainfall. This enhanced rainfall is further increasing the forest. This is a positive feedback which is. You got my point? Clear है? आपको बेटा नींद आ रही है क्या आपको? अगर आपको एसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन सिट हियर, बेटर ये रहेगा आपके लिए. टेस्ट किस चीज का था आपका? एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का था. अच्छा, तो टेस्ट तो देना तो माइंड फ्रेश कर देता है टेस्ट तो. देखो बच्चों, यहां तो आपकी चॉइस है आपको देना या नहीं देना. ठीक है, नहीं मैं एक बात बता रहा हूं, ये आप यहां का ही नहीं, सब जगह यही हाल है. दिल्ली में भी मैं देखता हूं जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन सबसे कम अटेंडेंस होती है. ठीक है, तो बच्चे तो आप ही जैसे ही हैं. आप ही लोग तो जा रहे हो, कौन सा दिल्ली अपने आप वहां पे फैक्ट्री है? और दिल्ली में कौन सा फैक्ट्री है? टीचर्स की फैक्ट्री है. सारे टीचर बिहार, यूपी और इधर की आके तो पढ़ा रहे हैं दिल्ली में. दिल्ली कौन सा टीचर बना रही है? ओके, और आप ही जैसे बच्चे दिल्ली जाते हैं और आप ही जैसे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं. ऐसा थोड़ा कोई दिल्ली में कोई बहुत बड़ा अफलातून है कि वो वहां पे जाके आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो आपको गाइडेंस यहाँ मिलती है वही दिल्ली में है, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे आपको ज्यादा पर्सनलाइज मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे टीचर आता ही आपके लिए है. वहां पे तो मैं क्लासेस लेता हूँ एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरे क्लास में टाइम ही कहाँ है. वहां पे तो आदमी हाईली प्रोफेशनल हो जाता है. ओके, तो अब दूसरा बात, दिल्ली इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव. आप खुद भी तो देखो, 10 लाख रुपए 2 साल के अंदर में खर्च हो जाता है. Doesn't make any sense of spending 10 lakh rupees for a competition जिसकी probability of selection ना ही काउंट करो तो अच्छा है. ओके, बेटा मैं सब दूंगा, पहले मुझे पढ़ाने तो दे. अभी 2-3 दिन मुझे पढ़ाने तो दे, मुझे फाउंडेशन तो बनाने दे. हाँ, मैं मेंस के भी लिखवाऊंगा, प्री के भी लिखवाऊंगा. ठीक है, तो टेस्ट सबने देने. अभी यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी के, जो भी मेंस के या उसके टेस्ट होंगे, लेकिन टेस्ट जरूर आप जितना मेरा, क्योंकि मेरी 3 विजिट मिनिमम लगेंगी ज्योग्राफी. एक बार में तो नहीं हो पाएगा, तो 3 विजिट लगेंगी. तो मैं अगली विजिट के अंदर में जब भी इसमें भी हमारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी और उसके अंदर में, क्योंकि देखो अगर तुम योर आंसर कॉपी इज योर ओनली विजिटिंग कार्ड फॉर द एग्जामिनर. इट इज योर विजिटिंग कार्ड. एग्जामिनर को तो बेटा ये भी नहीं पता होगा कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, आप कितनी किस कंडीशन में आपने पढ़ाई करी है. उसको तो ये सब, जो आपका आंसर है ना, वही आपका विजिटिंग कार्ड है. इसलिए कभी भी आंसर राइटिंग को अवॉइड मत करना. अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हो, तो अपने आंसर राइटिंग नहीं करो, देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयरिंग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा सामने रखो, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस. पीवाईक्यू हमेशा अपने सामने रखो, क्योंकि पीवाईक्यू क्या करते हैं, जीपीएस की तरीके से वर्क करते हैं. आपको रीसेंटर करते रहते हैं, नहीं इधर मत जाओ उधर मत जाओ, बस ये. क्योंकि देखो ज्योग्राफी अपने आप में ही, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है. तो मुझे भी अपने आप को बहुत जगह लिमिट करना पड़ता है. आई नीड टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ बिकॉज आई नीड टू
be limited to the requirement of the UPSC examination. There are so many things which there are mathematical equations also related to the feedbacks. So there is no need of going through those areas which do not have any requirement, which is not at all required for your civil services examination. Okay, now write down jaldi se लिख. अभी feedback का समझ में आया? Okay. लिखिएगा. Any change in system triggers feedback. Okay, लिखिएगा. A feedback which enhances the change, which enhances the change is called positive feedback. Is called positive feedback. Whereas a feedback which resists a change, is called negative feedback. Okay? और आप कह सकते हो नेगेटिव फीडबैक का काम क्या है? स्टेटस को मेंटेन करना. नेगेटिव फीडबैक विल मेंटेन स्टेटस को. नेगेटिव फीडबैक विल मेंटेन स्टेटस को. So anything which resists the change is called a negative feedback. Anything which enhances the change is called positive feedback. Is clear? अब चलो हम लोग देखते हैं. अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपसे कहा कि एक है ग्लोबल वार्मिंग. अब चलो इसको हम लेते हैं. क्या है ग्लोबल वार्मिंग? तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. बोलो बच्चों, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. एक हमने ले लिया, बहुत सारे हो सकते हैं, बट वी हैव टेकन इट टू बी एज अ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. देन व्हाट विल हैपन? अ रिफ्लेक्टिव स्नो. Reflective snow will be replaced by brown earth. जो भी कलर होगा. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्राउन अर्थ भी हो सकता है या ब्लू ओशन भी हो सकता है. अगर आर्कटिक की आइस मेल्ट हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लू ओशन हो जाएगा. और अंटार्कटिका पे हो जाएगा तो ब्राउन अर्थ दिखेगी वहां पे. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक तो सी है. व्हाट दिस पॉइंट? तो दिस इट इज गोइंग टू इंक्रीज द. अब क्या होगा? इट विल एब्सॉर्ब मोर सनलाइट. सनलाइट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी? होगी नहीं होगी? अरे बेटा किसी जगह पे अगर ओके सनलाइट ज्यादा एब्सॉर्ब होगी तो क्या होगा? री रेडिएशन. री रेडिएट. ऑफ एनर्जी. ओके, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ जाएगा. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बढ़ जाएगा and this will increase in temperature, and this increase in temperature will result into more global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग ने ट्रिगर करा, अब बाद में चल के और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई. तो दिस टाइप ऑफ अ मैकेनिज्म इज कॉल्ड टू बी एज अ पॉजिटिव feedback. Point is clear? This is called to be as a positive feedback. Beta आपको clear? Okay, this is called to be as a positive feedback. Now come to the next one. Okay, now let's take the same case. Now global warming
Global warming means increase in temperature. Okay, which means more evaporation. Which means more evaporation, increase in temperature. So what it means? More evaporation from the water bodies. बोलो बेटा. Okay, मैं आपको छोटा सा एक चीज बताता हूँ कि how the this is our earth and this is our atmosphere. So how the water is entering into the atmosphere? How the water enters into the atmosphere? And this process is called, there are only two processes, that is called evaporation plus transpiration. These are the two mechanisms through which the water enters into the atmosphere. And we combine and take it to be as a evapotranspiration. Point is clear? That is called to be as a evapotranspiration. Okay? This is how the water enters into it. So what will happen? More increase in temperature will result into more evaporation. More evaporation will result into more cloud formation. More clouds. ट्रांसपायरेशन बेटा, ट्रांसपायरेशन बाय द मूविंग एयर होता है. कपड़े को दो तरीके से सुखा सकते हो. एक तो धूप में रख के सुखा सकते हो जिसमें इवेपोरेशन हो, या पंखे के नीचे रख दो जिसमें ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन. ओके, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? इवेपोट्रांसपायरेशन. पत्तियों से किस तरीके से मॉइस्चर जो होता है वो जाता है. ओके, आपको पता हो जब ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं, जब ड्राई क्लाइमेट के अंदर में द प्लांट्स टेंड टू एडेप्ट बाय द स्टोमेटा की ओपनिंग और डीप में चले जाते हैं स्टोमेटा. दिस इज हाउ द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इन अ रीजन्स वेयर वी हैव अ ड्राई क्लाइमेट और वेयर वी हैव अ, और द नेचर ऑफ द लीव्स विल डिटरमाइन ओके अबाउट देयर एडेप्टेशन प्रोसेस. ओके, तो क्या होता है कि पेड़ों से, पेड़ क्या करते हैं, रूट्स से, पेड़ की जो रूट्स होंगी, वो क्या करेंगी? दे विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, मॉइस्चर विल ट्रैवल द ब्रांचेस एंड हियर इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. ओके, एंड हाउ इट इज गोइंग टू गेट इवेपोरेटेड? ओके, बाय द मूविंग एयर. ओके, जो एयर मूव करती है. ओके, so it will pluck the moisture. अगर तेज हवा के सामने अपने मुंह को रख दोगे तो मुंह ड्राई हो जाएगा. क्यों हो जाता है? मॉइस्चर को साथ ले जाता, प्लग कर लेती है. ओके, और यही कारण होता है बेटा, जब हवा सी से लैंड की तरफ चलती है तो मॉइस्चर लेके चलती है. ओके, बिकॉज इट प्लग्स द मॉइस्चर. इज इट क्लियर? Whenever the wind is moving from sea to land, it must be a moist air. By the process of evaporation and by the process of transpiration, so it is absorbing the water. Clear है? Okay, so क्या होगा? More cloud formation. तो cloud क्या करेंगे? They will block terrestrial radiation. They will block solar radiation, sorry. They will block solar radiation. They will block solar radiation. So it will result into cooling. कूलिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी. तो व्हाट विल हैपन? तो कूलिंग हो जाएगी. तो ये किस तरीके का फीडबैक हो गया? नेगेटिव फीडबैक. यस, दोनों को इफेक्ट डालता है. ये डिपेंड करता है हाई क्लाउड है या लो क्लाउड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. नेचर ऑफ द क्लाउड भी जो होता है, हाई क्लाउड है या लो क्लाउड है. तो हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लाउड फोर्सिंग, क्लाइमेट चेंज. वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड विल रिजल्ट इनटू अ इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज.
ओके और हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाउड फोर्सिंग एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट. Will the cloud enhance the greenhouse effect or not? Okay, if they start absorbing the terrestrial radiation and re-radiate it, there are chances that it will enhance the what? A greenhouse. Point is clear? Okay, so that is a different concept that we will discuss. Okay, so this is how a negative feedback is of. करते हैं बेटा. क्लाउड्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को भी ब्लॉक करते हैं. जैसे अब इसको इस तरीके से समझो. ओके, मान लो क्लाउड्स का दो तरीके से समझने की कोशिश करो क्लाउड को. अगर क्लाउड फॉर्मेशन है, क्लाउड्स हैं. ओके, क्लाउड अलग अलग कैटेगरी में होते हैं. हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड एंड लो क्लाउड. ओके, लो क्लाउड्स जो होते हैं इनकी अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स. दे विल ब्लॉक द सोलर रेडिएशन एंड एज वेल एज द टेरेस्ट्रियल. अब होगा क्या कि मान लो अगर क्लाउड फॉर्मेशन कब हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कूलिंग मिलेगी या फिर आपको वार्मिंग मिलेगी. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन. अब आप मॉर्निंग में 8 बजे उठे. ओके, आप 8 बजे या 7 बजे उठे और आपने देखा कि पूरा क्लाउड है. पूरा क्लाउड है. मिडिल क्लाउड्स हैं और ये पूरे एरिया को कवर कर रखा है. somewhat stratus type of a cloud. So what will happen at this time? The earth is not radiating the heat because earth is not yet heated. So what will happen? They will block the solar radiation and they will tend to go back. They will tend to reflect the solar radiation in a significant number. ऐसा नहीं कि सारा चला जाएगा. A significant number they will reflect. Why? Because the top of the clouds may be having some ice particles. And ice का albedo effect ज़्यादा होता है. Okay? Is it clear? तो high cloud या medium clouds हैं तो उनमें ज़्यादातर ice के crystals हो. This point is clear? अब समझो. अगर मान लो तुम 4 बजे तुम्हें क्लाउड मिलता है, 4 PM, पूरे दिन तो धूप निकलती रही, लेकिन 4 PM पे आपका क्लाउड आ जाता है. अब ये 2 बजे के बाद से द अर्थ स्टार्ट कूलिंग. एंड हाउ द अर्थ कूल्स? बाय द प्रोसेस ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. कोई भी चीज बेटा गर्म होगी तो बाद में ठंडी कैसे होगी? वो री रेडिएट करेगी नहीं करेगी हीट को? समझ में आई बात? अब जब ये री रेडिएशन का प्रोसेस चल रहा है तो क्लाउड आ गए. अब क्लाउड ने किस तरीके से बिहेव करा? इस तरीके की ब्लाइंड्स, विंडो ब्लाइंड्स की तरीके से बिहेव. Why they are blinds? Because they are blocking the solar radiation. Okay, and that is why the heat, the temperature that you are here is maintained. You getting my point? So heat is not coming in or going out because they are behaving like a blinds. So cloud will behave like a window blinds. Okay, and they will block the terrestrial radiation. In fact, the best part of the cloud is that they will block that part of a terrestrial radiation where it is maximum. Okay, so as a result, what will happen? If they block, they will re-radiate it back to the earth. They will re-radiate it back to the earth. So what will happen? The heat will keep on circulating, okay, and it will enhance the temperature. तो आपको क्या होगा? 4-5 बजे के बाद अगर आपको क्लाउड मिलता है तो आपको बड़ा सफोकेशन सा, और सुबह सुबह अगर आपको क्लाउड मिल गया तो पूरा दिन आपका ठंडा रहने वाला. समझे? ओके, सो मैंने बताया ना, अर्थ पूरा एक सिस्टम है. क्लाउड भी एक फिनोमेना है. फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड इज इटसेल्फ अ फिनोमेना. हवा का चलना एक फिनोमेना है. इज इट क्लियर? हर चीज जो भी मूवमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, सब एक फिनोमेना से रिलेटेड है. ओके,
अब सिंपल सी बात है, देखो अगर मान लो सपोज करो कि तुम इंडिया के अंदर में अगर तुम स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन में हाई, अगर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इनहेंस कर देते हैं, मतलब इफ वी इंटेंसिफाई द ग्रोथ ऑफ द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, सो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? अगर हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे देन व्हाट विल हैपन? मीन देयर विल बी मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर, होगा? गड़बड़ हो गया। देयर विल बी मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब ये ढंग से बना नहीं है बच्चों, ठीक है? देयर विल बी मोर इंक्रीज इन द टेम्परेचर, okay, there will be more increase in the temperature. Why? Yes, okay, अभी कहीं पे जंगल थे, फॉरेस्ट थे, and you have cleared the forest for different purpose, for settlements or for agriculture purpose. What will happen? The albedo will be different, the rate of absorption of the heat will get changed, and if the rate of the absorption will get changed, it will trigger the new feedback. So it is likely that the entire weather system may get changed, or in fact the entire the regime of our monsoon rainfall regime may get changed, because they are presently settled with a certain type of a surface. Once you change the nature of the surface, it will result into a new form of a equilibrium, and that equilibrium may be favorable for you or may not be favorable for you. ये भी हो सकता है कि if a new equilibrium, Rajasthan will receive more rainfall, okay, and the other part of the India may not start receiving rainfall. If there are more cyclones, okay, it will naturally going to affect the if there are more cyclones, then it is going to affect the coastal settlements. Is it clear? So always remember that the human made system is not independent to physical system, okay, you are not independent to physical system. अब तुम देखो, if there is an increase in the temperature, what will happen? You will start using more conditioning system. So what will happen with these conditioning system? If you go to the outer unit, if you look to the outer unit of these conditioning system, what they are doing? They are creating a thermal pollution, okay, they are creating a thermal pollution, and or they are releasing the heat. So with this release of the heat, okay, अब मान लो सपोज करो जयपुर के अंदर में, अगर मैं कंजर्वेटिवली भी बोलूं तो भी मोर देन 1 लाख एसीज लगे हुए होंगे, ज्यादा ही लगे हुए होंगे, एंड इफ अ सिंगल एसी इज रिलीजिंग अ हीट, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हाउ मच ऑफ द हीट इज रिलीज्ड, and this heat is going to get absorbed, okay, so if this heat is going to get absorbed, what will happen? They will lower down the relative humidity of the air. एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम कर देगी, तो लेसर चांसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है, या फिर एकदम से अगर एयर जो होगी वो राइज करेगी एक बबल की तरीके से ऊपर की ओर राइज करेगी, तो इट में रिजल्ट इनटू मोर स्टॉर्मी कंडीशंस, डस्ट स्टॉर्म्स, it may cause more dust storms or the other condition. It will increase the aerosols. Getting my point? And if you have more aerosols, then it may be possible that you have a more incidence of lightning and more instances of thunderstorms also. You're getting my point? So बेटा जब lightning के लिए charged particles चाहिए होते हैं ना, charge, तो when you have, जैसे दिल्ली के अंदर में प्री मानसूनल लाइटनिंग जो है वो रिलेटिवली बढ़ती जा रही है, ओके, इंसिडेंस ऑफ द लाइटनिंग, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में इंसिडेंस ऑफ द लाइटनिंग इन द प्री मानसून पीरियड इज ऑन राइज, एंड इट इज जनरली
it is generally contributed by the dust particles or by the particulate matter as a result of so many construction, urban infrastructures, okay, or the pollutions. So they actually serves as a charged nuclei, okay, and these charged nuclei by the process of the induction also electrifies the cloud, and that may enhances the chances of lightning. Are you getting my point? Okay, so human made system is not independent to physical system, never consider. You are affected and you can affect them, reciprocal. Okay, even your agricultural system is dependent upon to the physical conditions prevailing into a particular place. अब तुम यहाँ पे थोड़ी कोई सेब को उगा लोगे, तुम एक आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, but the quality of the food would not be as good as that you will get in Kashmir or Himachal or Uttarakhand. अब यहाँ पे तुम वॉलनट बना कर लोगे? नहीं कर सकते. ओके, लेकिन ग्रेप्स चाहोगे तो ग्रेप्स हो सकते हैं. ओके, और भी चीजें होंगी. अमरूद यहाँ का बड़ा फेमस है, राजस्थान का. ओके, तो कौन सी जगह है वो? बनास नदी जहाँ पे चंबल से आके मिलती, क्या नाम है? रणथंभौर के पास सवाई माधोपुर. ओके, सवाई माधोपुर इज एक्चुअली फेमस फॉर गुआवाज. पता ही होगा आप लोग, गुआवा बहुत अच्छे हैं. ओके, तो अब देखो उसके अंदर में अगर आप देखोगे तो हमारे जो एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं वो भी फिजिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, और हमारे एग्रीकल्चरल सिस्टम में ऑल्सो कॉज अ चेंज इन द फिजिकल सिस्टम. ओके, अगर आप मान लो सपोज करो इंडिया के इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में अगर तुम ज्यादा इरिगेशन करोगे, if there is more irrigation in the northwestern part of the India, if we have more irrigation in the northwestern part of the India, what will happen? हैं? ज्यादा इरिगेशन होगा तो बेटा क्या होगा? ज्यादा इवेपोरेशन भी हो सकता है. तो पूरा का पूरा रीजन जो होगा वो एक सोर्स ऑफ द हीट है फॉर द मानसून. तो इट मे हैव अ इफेक्ट ऑन द मानसूनल विंड्स. ओके, सो व्हेनेवर द लैंडस्केप is humanized, it will trigger a feedback. पहाड़ों पे जाके कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी हमने, तो उससे क्या हुआ? फीडबैक ट्रिगर हुआ. क्या? लैंडस्लाइड्स. Okay, these are the feedbacks of the nature, and nature, this is a negative feedback in order to maintain a new balance or a status quo. आप देखो मनाली में कितना इस बार नुकसान हुआ है. मनाली में कम थोड़ी होता है. प्रॉब्लम ये है कि हम अनसाइंटिफिक तरीके से इस तरीके का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को ध्यान में न रखते हुए और हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाते जा रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली इन अ लॉन्ग रन, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर इट इज बिलीव दैट द ट्रॉपिकल इन द ट्रॉपिकल रीजन इंडिया इज गोइंग टू बी वर्स्ट अफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्योंकि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तुम्हारी. ठीक है, प्रॉब्लम इसकी नहीं है. प्रॉब्लम है कि आपकी 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है. अगर आपका एग्रीकल्चरल अफेक्ट हो जाएगा तो पेट्रोल तो मंगाते थे, अब खाना भी बाहर से मंगाओ. तो जिस कंट्री को एनर्जी रिसोर्स बाहर से मंगाना है और जिस कंट्री को फूड रिसोर्स बाहर से मंगाना है, वो 100% गुलाम बनेगा ही बनेगा. क्योंकि उसका कोई प्रोडक्शन है नहीं. समझ में आई बात? ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अवर डेवलपमेंट शुड बी इन अ मैनर that we pay attention to people, profit
एंड प्लैनेट, PPP। लोगों का भी ध्यान रखना है। अगर हम नेचर से रिसोर्स नहीं लेंगे तो हम करेंगे कैसे भाई? नेचर ही तो देगा। तो पानी तो नदी से ही लेना है या अंडरग्राउंड वाटर ही लेना है, लेकिन हमें रिप्लेस भी करना है। वाइज यूज ऑफ द रिसोर्स। ओके, अगर फॉसल फ्यूल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनते जा रहे हैं तो वी नीड टू रिप्लेस द फॉसल फ्यूल्स with the other forms of the mobility, and now we are working on electrical mobilities, and maybe after 4 or 5 years, because throughout the world बहुत काम चल रहा है और इंडिया ने भी सोलर अलायंस और ये सब हमने करे हैं, and we are also working on this particular purpose. लिथियम डिपेंडेंसी को इंडिया वर्क कम करना चाहता है क्योंकि लिथियम इंडिया में है नहीं, इंडिया में लिथियम रिजर्व है नहीं। अगर हम लिथियम डिपेंडेंट अगर अपना एनर्जी मॉड्यूल्स बना देंगे तो कोई भी कंट्री अगर लिथियम नहीं देगा तो हमारी तो एनर्जी खत्म। तो लिथियम डिपेंडेंसी को हम कम रखना चाहते हैं कि लिथियम ना करके हम दूसरे ऑल्टरनेट्स जो हो सकते हैं, जैसे सोडियम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो और जो ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं, वी आर वर्किंग ऑन दोज ऑल्टरनेट्स दैट वी कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ अ प्रोडक्शंस, एंड 4-5 साल में हो जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन will get completed in this 4 or 5 years, I believe, and people will also get aware कि भाई घर के consumptions के लिए it's better that you use a solar panel instead of total green energy तो नहीं मिल पाएगी, green energy एक misnomer ही है, okay, total green energy नहीं होगी, but up to some extent we will be able to manage this issues related to the global warming by reducing our carbon emissions. Now, it's not only about the reduction into the carbon emission, we also need to look to the changes that we are doing over to the surface. Okay, the changes that we are doing to the surface, how we are humanizing the landscape. Okay, for example, if we are growing a crop in a water stressed areas, okay, if we are growing a crop or a water intensive crop in a water stressed areas, then it will result into the over exploitation of the resource. Okay, over exploitation of the resource. Is it clear? If we are laying the roads or if we are laying the infrastructure without paying attention to the nature of the slope, if we are felling down the trees or if we are cutting the forest, if we are removing the forest cover and without replacing them, okay, without replacing them in a similar way, then it will again result into a feedback. Okay, अभी जैसे कौन सा था उसमें कौन सी उसका प्रोजेक्ट का चल रहा था जिसमें बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया जो होगा ना वो कट करा जाएगा, जो बॉर्डर को लेके उन्होंने बिल पास करा है ना, FCA को लेके जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर में अमेंडमेंट लाए हैं कि रिगार्डिंग दी बॉर्डर एरियाज और नेशनल इंटरेस्ट के अंदर में करके हो। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ये है कि वो लोग गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री और इन टर्म्स ऑफ जो सड़कों के किनारे होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट अर्बन फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री will not provide the similar type of ecosystem services as the dense forests are providing. Okay, so but sometimes it is required, it is believed to be, पहले तो सिक्योरिटी है, देश की सिक्योरिटी है, तो प्रायोरिटी पे सिक्योरिटी जब आ जाएगी तो ऑब्वियसली हम चीज़ों को रिड्यूस, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस और चीज़ों की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, बट इन अ लॉन्ग रन अगर हम देखें तो इट इज गोइंग टू बी, because whatever the expenses that we have done in making the infrastructures, okay, in the Himalayan regions, now this time the flood has reduced, it has resulted into the loss of nearly 40% of such infrastructure. Now reconstructing them means another cost. You got this point? Is it clear? So, and why such things are getting triggered and why we have, it's not only कि इंडिया का ही काम है, पूरा ग्लोबली जो है वो जब तक पूरा ग्लोबल मैनेजमेंट नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ
देयर एमिशंस एंड इन टर्म्स ऑफ देयर अदर थिंग्स, ओके, तब तक इस चीज को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, वार्मर टेम्परेचर होगा, ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ज्यादा रेनफॉल भी हो सकती है, रेनफॉल भी ज्यादा हो सकती है। अब रेनफॉल ज्यादा होगी तो रेनफॉल अगर ज्यादा होगी तो वेजिटेशन भी बढ़ सकती है, वेजिटेशन ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। ज्यादा जहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे वेजिटेशन ग्रोथ रिलेटिवली ज्यादा होती है, तो वहां पे वेजिटेशन बढ़ सकती है। अब अगर वेजिटेशन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ज्यादा होगा वहां पे। अब अगर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस। ओके, तभी तो कहा जाता है कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं। So that is why 33% is taken to be as an target area. That for a country like India, nearly 33% of the region should be under a forest. Okay, so that we can be able to replenish the carbon dioxide with the oxygen, or we will be able to recycle the carbon dioxide that we have released or the gases that we have released. ओके, अभी तो खैर पेरिस उसमें और उसमें हमारे तो वो भी हैं, टारगेट्स भी हैं कि बाय 2030 वी नीड टू कम आवर एमिशन टू अ बिलो टू अ सर्टेन लेवल। कुछ कंट्रीज ने तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिसमें जिन्होंने कार्बन नेगेटिव हो चुके हैं, तो भूटान है, भूटान इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री। ओके, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, जो भी है वो तो जो भी उनको अपना लेवल, अभी तो खैर देखो रिवाइज होने की बात चल रही है और देखो क्या होता है उसके अंदर, बट वी आर वर्किंग एंड वेरी कमिटेडली वी आर वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग अवर एमिशन। ओके, इंडिया में, और इंडिया में बहुत जरूरी भी है कि अगर एनर्जी ट्रांजिशन हमने नहीं करा और उसको जल्दी से कंप्लीट नहीं करा एनर्जी ट्रांजिशन, ओके, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ओके, चलिए, so this is done, this is clear to all, this feedback systems is clear to all. Okay, चलिए अब हम आगे चलते हैं एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ब्रेक चाहिए है? 3 घंटे की क्लास है। लैंडस्केप बेटा ये हुँ? ये चलो उतार लो तुम लोग। करंटली मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी कम है, 22 17 तो हमारा डेंस फॉरेस्ट के अंदर में आ रहा है, 22-23% के आसपास, लेकिन हमने डेफिनेशन चेंज करके 22-23% कर दिया उसे। जो भी है बट मुश्किल है, हम डेफिनेशन चेंज कर देते हैं डेंस फॉरेस्ट की, कैनोपी डेंसिटी के बेसिस पे हम कैनोपी डेंसिटी ही हम चेंज कर देते हैं तो हमारा फॉरेस्ट कवर दिखते हैं पब्लिक। अगर आपने डेफिनेशन चेंज कर दी तो आपका फॉरेस्ट कवर बढ़ गया। ओके, बट द प्रॉब्लम इज जो डेंस फॉरेस्ट हैं, the services that they provide or the utility of those forests is not मतलब is unparalleled। आप रिप्लेसमेंट से सेम चीज नहीं ला सकते। क्या आप ये सोचो कि पहाड़ का हम पेड़ काट के प्लेन में हम पेड़ लगा देंगे तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू दिस सिमिलर टाइप ऑफ अ फंक्शन। ओके, चलो चले आगे। ओके, चलिए एंड देन चलिए अब हम आ जाते हैं, सेव कर दूं इसे मैं? ओके, चलिए
अब आज का अभी जो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थ एंड द मून, हेडिंग डालो जल्दी से। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब जो है ना वो आपको समझ। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और ये सब बेसिक चीजें वो आपको पढ़ना है। ओके, पहला पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, उस पर क्वेश्चन भी काफी आते हैं। ओके, देखिएगा, अर्थ अर्थ is a member of the solar system and is one of the 8 planet and is one of the 8 planet revolving around the sun। अब ये तो सबको पता है ना। okay? It is the only planet which supports various forms of life, which supports various forms of life। Stop, देखो next point, its 2/3 part is covered with water, therefore it is also called as a blue planet। It is also called as a blue planet। blue planet। ओके, आगे लिखिएगा, अर्थ lies earth lies in a earth lies in a earth lies in a Goldilocks zone। Goldilocks zone। Goldilocks zone। Goldilocks zone। okay, Goldilocks zone, which is at a safe distance from the sun from the sun and which do not makes it too hot and neither too cold, neither too cold। This point is clear। इस जोन को कहा जाता है अ जोन विच इज एट अ डिस्टेंस, अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एंड अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन मीन्स दैट नीदर it is too hot, neither it is too। So generally earth and the Mars are generally believed to be lying into the Goldilocks zone, and it is believed that the probability of the life may be there on the on this, and a part of the Venus also। okay,
So it is believed that this two reasons, mainly this Earth and the Mars, could be something where the possibilities of the life can exist. Okay, but the possibility of the life will exist only when there is a probability of water. Okay, if without the water the life is not possible, or the various forms of the life is not possible. Okay, and for a water it is very important that the gravitational pull of the planet should be sufficient enough to maintain the water under its attraction of gravitation. Otherwise the water will leave the, what will happen? The water will leave the planet. So Earth is of a very standard size, a certain size, which provides its a gravity strong enough to hold the gases around it. So many other planet, if any planet even lying into the Goldilocks zone, the gravitational pull is not sufficient enough to hold the gases. For example, we talk about the moon. Okay, it's a celestial body, not planet. So moon. So the gravitational pull of the moon is not sufficient enough to hold the gases. Are you getting my point? And as a result, the moon is not protected from the solar radiation, solar flares, or the meteorite impact. Okay, you see that so many craters. There are craters on the surface of the moon. Okay, and these craters are generally created by meteorites, impacts of the asteroids and the meteoroids. They may have meteoroids that hit the surface of the moon, because they do not have any protective covering. They do not have any protective covering. You got this point? Or even if it is having the atmosphere is relatively very thin atmosphere. Is it clear? तो अभी तो खैर एलॉन मस्क प्लान में है कि ह्यूमन कॉलोनीज को सेटल किया जाए ऑन मून एंड अदर प्लैनेट्स पर एक्सप्लोरिंग चल रहा है कि वेयर द लाइफ कैन फ्लरिश. So they are in the plan कि भाई we will start the evolution process. The process of the evolution may get triggered. If we trigger the evolution process, then possibilities of the life may develop into on certain planets. Okay, point is clear भाई साहब? चलो आगे लिखिएगा. Okay, देखिएगा, the origin of the earth the origin of the earth is related to the birth of the sun. Which grew by the collapse of rotating cloud of dust and gases known as solar nebula. Known as a solar nebula. So it is believed that our solar system originated from a nebula. Okay, what is a nebula? Nebula is a cloud of dust and gases. Okay, and when this cloud of the dust and the gases collapse under its own gravity, okay, it start collapsing under its own gravity, and which result into the glowing of a central portion, and this glowing of the central portion result into the birth of the sun, and the remaining part of the nebula again start collapsing into a certain form of a masses, and these masses eventually generates into the form of a planet. But this story is not as
simple as I just complete it in just 30 seconds. It's a complete process that you need to understand, that from the solar nebula, the formation of the different planets took place. Nebular theory is one of the most acceptable. We still have more evidences of the solar nebular theory, okay, in comparison to the other forms. Today we take nebular theory, solar nebular theory, or a nebula is believed to be, nebula is the means, nebula is existence of the nebula is well evident from various of our observations through astronomical telescope. Okay, and this nebula is not a whole galaxy, it is a part of the galaxy. Galaxy consists of such nebula. Okay, now there are still, we are learning that how this nebula collapse, how it took place. Okay, so that is a main area of the research, but there is no doubt in terms of the nebular theory. The solar nebular theory is believed to be one of the most acceptable theory, or nebular hypothesis is believed to be the most acceptable. हाँ वो हो सकता है. Okay, हर एक के criticisms हैं. Whatever for us in the general studies paper, a solar nebular theory is more than sufficient. Okay, अब आगे लिखिएगा. लिखिएगा, nebula starts contracting under its own gravity and start spinning faster. Starts contracting under its own gravity and spins faster and start spinning faster. लिख दो, and started spinning faster. Okay, जब साइज कम हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो थ्योरी लगती है ना, जब साइज छोटा हो गया मास उतना ही है. ओके, तो उसकी स्पीड जो थी वो बढ़ जाती है, स्पिनिंग फास्टर. ओके, देखिएगा, दिस रैपिड रोटेशन, फुल स्टॉप लगा के, this rapid rotation is not uniform at all the places. देखिएगा, the central part was rotating slower okay, rotating slower, and the outer parts were having more speed. आगे लिखिएगा, more speed. ठीक है, the central part collapse in the form of a central star, in the form of a central star, in the form of a central star, in the form of a central star known as, in the form of a central star known as, in the form of a central star known as
in the form of a central star known as sun. Okay, known as the sun. देखिएगा, the outer part due to differential movement broken into multiple rings, due to differential movement broken into multiple rings. Okay, multiple rings, and these rings later on collapsed in the form of planets. Later on collapsed in the form of planets. Point is clear? Later on collapse in the form of a planets. और थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, मैं आपको बता रहा हूं, लिखिएगा. लिखिएगा, collapse of the nebula is believed to be the main reason behind the formation of solar system. देखिएगा, nebula consists of gases. Nebula consists of gases. These gases condensed. These gases condensed in the form of solid grains. These gases condensed in the form of a solid grains. In the form of a solid grains. Full stop. It is believed that first grains that were formed, or elements आप कह सकते हो, first grains that were formed was nickel, iron, and some silicates. सिलिकेट, सिलिका जिसमें होता है, सिलिका SI जो होता है, नहीं पता बेटा? पता होगा ना SI, रेत जो कॉमन सैंड होता है, तो दैट इज अ टिपिकल, एंड सेमीकंडक्टर भी होता है. ओके, अब आगे लिखिएगा, लिखिएगा, these grains stick together in the form of large pieces. Okay, of around
pieces of around 10 kilometers in diameter. 10 kilometers in diameter. देखिएगा, these large pieces around the sun are called planetesimals. Are called planetesimals. PLANETSIMAS. आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस ऑफ द प्लैनेट्स है. ये प्लैनेट का बनना यहीं से शुरू होता है. So first of all, what happened? The solar nebula, because we have a solar nebula, and the central, because the central part was not rotating much faster than the surrounding trees. So central part actually collapsed, and it collapsed in the form of a glowing star, because most of the star formation also take place from the collapse of the gases. Okay, so when the gases start collapsing, then it results into more heat generation, and it results into the glowing of a central part. Okay, and these stars are also the factories of many elements, because many fusion reactions are taking place, because it is believed that initially hydrogen may be the only element that may be present, and hydrogen then by the process of fusion may have generated the helium, and from the helium fusion reactions we have many other elements which may have generated carbon, iron, and all the other elements may have generated. But the point is, where does such fusion take place? The fusion will take place only in a star. No other places are there where the fusion reaction is taking place, even not inside the earth also. Okay, we don't have any fusion reactions taking place inside the earth. Okay, till date we believe that no such fusion, because for a fusion reaction the temperature should be strong enough, and if the temperature is such a strong for to initiate a large scale fusion reaction, then that cannot result into a solid planet. पूरा planet ही dissolve हो जाएगा, पूरा planet ही melt हो जाएगा. You got this point? So that is why the sun cannot be, sun seems to be as a glowing star, because our intense fusion reactions are taking place. So, but surrounding the sun we were having a gases, and there are some gases which escape the heat of the regions which escape the heat of the sun. The gases start condensing, okay, and the condensation results into collisions among the gas molecules, and these collisions were strong enough that results into the creation of a solid grains. Is it clear? So helium may be in the form of a gaseous helium, okay. It may be, the elements may be in the form of a gaseous state, and later on when they get condensed, they condense into the form of a solid grains, and many solid grains combines to form a larger block, okay, to form a larger block, and this larger block of around 10 kilometer in diameter or in size is believed to be a building block of that planet or a nucleus of the planet, and which is generally termed to be as a planetesimal. So from these planetesimals, there may be so many planetesimals. Every planetesimal did not result into the creation of a planet. There are some planetesimals which grow in a size, okay, which grew in a size and which resulted into the creation of a planet. But there are some planetesimals, because you see that, try to understand this one. When multiple planetesimal will combine, then only a larger object will create it. Initially grains will combine to form a planetesimals, and then many planetesimal will combine to create a larger block. But you see that whenever they combine, suppose two things collide. So when you collide the two things, or when you hit the two things, what will happen? What is generated? Sound and a heat. A sound and a heat. If you clap your hand, what is there? A sound and a heat. Why the heat is generated? Because the air is compressed. Between your two palms, the air is compressed, and when the air compressed, it results into heating. This is a sudden compression. Is it clear? So, or if you friction hoga, to bhi heat generate hoga. Okay. So what will happen, that
not all the collisions will result into a creation of a larger one, because it may be possible that both of them are coming with a great speed, okay, and they will smash into each other. So if they smash into each other, they will be just thrown into the air in the form of a very small grains. So they need to again start from a beginning. So the speed needed to be controlled so that they can collapse, okay, into a larger one. ओके अगर मान लो कोई बॉल है तुम्हारे पास, आइवरी बॉल है, उसको जोर से दीवार पे मारोगे तो बॉल भी टूट गई, दीवार भी टूट गई. यू गेटिंग माय पॉइंट भाई साहब, समझ में आया? ओके चलिए ओके आगे लिखिएगा. देखिए, दीज प्लैनेटेसिमल्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग matter through their gravitational influence. Influence. Okay, लिखिएगा. These planetesimals accreted मतलब दोनों से जुड़ जाना, accretion. Okay, these planetesimals accreted, A double C RETED. accreted का मतलब होता है दो चीज मिलके आपस में सिंगल बन जाना. accreted, ACCRETED, accreted to form a larger mass. Okay, देखिएगा, it is believed that initially there were few dozen, दर्जन, ठीक है, डॉजन larger bodies were created as a result of accretion, which were more than which were more than 1,000 kilometers in size. Okay, thousands of kilometers in size. देखिएगा, these bigger size bodies are known as planetary embryos. These bigger size bodies are known as planetary embryos. These bigger size bodies are known as planetary embryos. These bigger size bodies are known as planetary embryos. Planetary embryos. Okay, these bigger size bodies are called as planetary embryos. EMBRYOS. सही कर देता हूँ. Embryos. These bigger bodies are known as planetary embryos. देखिएगा, these planetary embryos also collided with the smaller bodies and other planetary embryos,
and other planetary embryos. And other planetary embryos. Generating heat and melting up to the center of the planetary embryo. बिकॉज जब बार बार प्लैनेट्स हिट करते थे, प्लानिटरी एम्ब्रियोज आपस में हिट करते थे, उससे हीट जनरेट होती थी, और हीट जनरेट होने की वजह से तो जो प्लानिटरी एम्ब्रियोज थे वो जब साइज में भी बड़े हो रहे थे, लेकिन साथ साथ में वो मेल्ट भी हो रहे थे बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ द हीट. देखिएगा, देखिए अराउंड 100 million years, around in 100 billion years, all the planetary embryos that were going to collide had probably done so. मतलब जिन-जिनका कोलिजन होने थे उनके हो चुके. ओके, had probably done so and leaving the solar system into 4 inner planets and 4 outer planets. 4 inner planets and 4 outer planets. Point is clear? 4 inner planets and 4 outer planets. So how the story of the solar system begin? If we look to the story of the solar system, क्या हुई? सोलर सिस्टम की स्टोरी जल्दी से मुझे बताओ क्या हुई? कि सोलर सिस्टम की स्टोरी हमने तो खैर बिग बैंग से स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि बिग बैंग इज बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो. So we believe that the formation of the universe began with this big bang system. Okay, so my point is that how this solar system. So we have just fast forward the history of the universe, and we are more concerned with the formation of our solar system. So formation of the solar system, obviously we have a nebular cloud within this galaxy, within this Milky Way galaxy, because within the Milky Way galaxy there are many places where you can observe the nebular cloud. Orion nebula, different types of the nebula that we can observe, and even we have many astronomical observatories in the Himalayan regions, in the Tibet and many, so they are also very good in terms of observing such nebular systems. Okay, so it is believed that the nebula start collapsing. So we are still in the process of learning that how the nebula start collapsing. Okay, what are the reasons behind the collapse of the nebula? So it is believed that the collapse of the nebula may be just because of the forces which may be generated by the nearby stars. So the explosion of the nearby stars may have generated the shock waves, and these shock waves may have resulted into the motions of the nebula in the particles of the nebula, or in the mass of the nebula. Okay, and this may have resulted into the collapse of the nebula, with the central portion being collapsed, because the heavier mass will be towards the center and the lighter mass will be towards the outer part. So the heavier mass of the nebula was more concentrated towards the center, which when collapsed
and as a result of this collapse, it start generating the heat. This heat this heat has resulted into the glowing of a central portion, and that glowing of a central portion you can call it to be as our sun. And around the sun, remaining other nebular material was arranged into a form of a dish. Around the sun there was a complete disk. Okay. Now in this disk there was a rotation, and the rotation was of differential into the nature. Differential matlab different regions may having a different rotational rate. And at present also we don't take the same rate of the rotation of all the planets. Different planets are rotating at a different rate. Okay. So different rotations are there, and as a result in the disk what happened? Some of the lumps of the masses start generating. Okay, it's just like suppose for example, if you are making any halwa or a suji halwa, okay, or you are making any besan halwa, जानते हो ना बेसन का भी हलवा बनता है ना, पता होगा आप लोगों को, है ना? And suppose if you do not keep on stirring it, then there will be lumps of the masses that will be get created. Lumps create हो जाते नहीं हो जाते? And if you do not pay attention, these lumps will grow in size. होता है नहीं होता? So same the case in our nebula also. Some lumps of the masses get created, and the bigger masses start attracting more matter, and the smaller masses will having a less gravitational pull. They attract the less matter. So what will happen? The smaller masses come under the influence of the gravity of the larger one. वो कहा जाता है ना, the bigger you are, the faster you will grow. Solar system तो यही बताता है. The bigger you are, the faster you will grow. Corona is an example of this one. The big corporate houses, their income increases manifold during this period of the corona, because they were having much reach in investing the situation, and the people who were at the marginal business holders, जो margin पे थे business वाले, उनको they were not in a position to grow up their business, because the business at that time requires a recapitalization. All the business requires a recapitalization. गारमेंट्स वाले जो थे उनके माल खराब हो गए, जिनके लेदर के गारमेंट्स थे खराब हो गए, उनके जिनके फूड आइटम्स का था उनका खराब हो गया. Okay. So my point is that the bigger you are, the faster you will. Same the case in all the sphere. You apply the political system. Bigger political parties will grow much faster than a smaller political party. Okay, than a smaller political party. So, so in that case, try to understand my point. So the point here is that the small lumps initially may grew in a size in a bigger one, and many bigger masses collided, and they again become to be as a much larger one of more than 1,000 meters in size, 1,000 kilometers in size. Okay, and they eventually develop into the form of a planetary embryo. There are multiple planetary embryos in that disk area. Okay, now these planetary embryos also collided with each other if they are in the same rotation frame, if they are in the same orbit, or if they are coming nearby the orbit of another one. So the bigger planetary embryo will attract the smaller one, okay, and it will get collapsed. So it will keep on sweeping all the material around its in a vicinity of its gravitational field, and it will keep on clearing that particular region. It will keep on clearing that particular region. So what will happen? Rings will get created, or dark rings will get created. Okay, because in those dark rings, all the material is swept into a single mass, and that particular rings are the regions where the planets are formed. Even in the Jupiter, your moon is found only in a region where the rings are there, black rings are there. Okay, so probability of having a moon lies only in the ring portion, okay, where there is a black rings. Is it clear? So my point is, so as a result, certain there are final in this combat, or in this battle of survival. Okay, there are 8 winners. Okay, finally there were 8 winners,
and which are our 8 planets. Okay, they don't have any competing mass in their orbit and neither in their vicinity, because they must have swept all the mass. Okay, so they have cleared their orbit, then only they are to be called as a planet. Otherwise, they will not be called to be as a planet. And due to this reason, we have excluded the Pluto from the definition of a planet. समझे जनाब? Okay, अब बात आती है कि मून की फॉर्मेशन कैसे हुई, how the moon was formed. Now the same collision approach, collision aspect is taken. It is believed that with this, when the embryo, planetary embryo of the Earth was formed and later on grew in a size by the multiple collisions. So with this collision there was a heat which was generated, which melted the entire planetary embryo. The heat which generated melted the entire planetary embryo, and this entire planetary embryo of the Earth was in the form of a fireball. Okay, initially it was in the form of a fireball. The temperatures were very high and the melting took place deep to the Earth, matlab deep to the center. Okay, so the cooling process has not yet initiated, because constantly there is a bombarding of the nebular material or the masses of the nebular material which accreted in the form of a small globular masses and enter into the Earth's gravity. When they hit the Earth gravity, they increases the size of the Earth and also spew large quantity of the matter into these. So one such protoplanet, it is believed that one such protoplanet known as Theia, that planet is known to be as a Theia. Okay, that is called to be as a Theia. Okay, one such protoplanet, Theia, Thia, Theia, hit the Earth. It was relatively larger in size, or in a bigger one. It was a bigger planet, a protoplanet which hit the Earth. So when it hit the Earth, then what happened, that much of the crustal mass of the Earth, the outer portion of the Earth, okay, means is fragmented, and a lots of material was thrown into the space. And this material which was thrown after the collision of the Theia, the material which was thrown start revolving around the Earth. अगर अर्थ से जो भी जाएगा अर्थ के चारों ओर ही ऑर्बिट करेगा ना, start revolving around the Earth. Okay, and later on the same process of collision and accretion take place. So lots of the material was there, and later on these material accreted into the form of our moon. So these material which is spewed from the Earth, okay, and also I tell you that this material, the heavier part of these material, because only the outer part of the Earth and this material got thrown into the outer space. The inner heavier part entered into the Earth core, and which resulted into the increase in the quantity of a heavier material into the Earth core. Is it clear? And the lighter material was thrown in the outer space, and these lighter material later on combined, accreted into the form of a moon. Point is clear? Yeah? No, formations of the oceans are something different. Okay, obviously we will discuss them in a different geomorphology में हम discuss करेंगे, but definitely the collisions, meteoritic craters, they were the initial basis of the formations of the water body. Okay, basins are created in a different way, and but not by the impact of the crater. Such a huge basin, very difficult to because that keeps on changing. Okay, so this point is clear. Moon की formation कैसे हुई? How the formation of a moon took place as a result of the collision of a Theia, a protoplanet, that is a Theia. And it is due to this reason, क्योंकि जो ये Theia का outer crust जो था, lighter material का जो outer crust था, वो सारा का सारा रिंग मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने लगा, और अर्थ का भी जो आउटर पार्ट था वो भी चक्कर काटने लगा. तो केवल आउटर पार्ट गया,
तो और आउटर पार्ट किसका बना हुआ है? लाइटर मटेरियल का। तो देयरफॉर मून के अंदर में ज्यादातर जो एलिमेंट्स हो क्या है? लाइटर एलिमेंट। द डेंसिटी ऑफ द मून इज लेस। प्रोटोप्लैनेट जो ही प्लैनेटरी एम्ब्रियोज जो होते हैं, दैट इज द प्रोटोप्लैनेट। ए ओके, इट रिजल्ट। अब देखो ये प्रोसेस कैसे होता है। इनिशियली द टेम्परेचर्स वर वेरी हाई, okay, and you cannot say that there is a differentiation of the material. Okay, initially the temperatures were very high and no such differentiation of the material took place. You cannot say that कि यहाँ पे high density का होगा, यहाँ पे low density. But as the earth start radiating the heat, okay, it start cooling and collapsing. It start cooling and collapsing, and this collapse also generated the heat. Okay, this collapse also generated the heat. Now what happened, that with this process of the cooling, what happened, the heavier material start shifting towards the center, and the lighter material start moving towards the pole, towards the surface. And this process is called to be as a, initially everything was molten, okay, but this molten form start getting differentiated into a different density layers, and these different density layers created into the earth, and which causes a different type of a chemical composition at a different depth. So we called Sial, silicon aluminum at the surface, and then we have a Sima, silicon magnesium, and then we have a Nife, or we sometimes take crust mantle core also. Point is clear? क्या क्या चीज बेटा? जब अर्थ इनिशियली क्या थी? फायरबॉल के तरह थी, लेकिन जब अर्थ का कूलिंग प्रोसेस शुरू हो, अब कूलिंग प्रोसेस के पीछे भी बहुत सारी वो है, बिकॉज लॉट्स ऑफ द गैसेस वर एमिटेड बाय द अर्थ, एंड दीज गैसेस एमिटेड व्हिच डेवलप्स टू बी एज अ इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एंड अमंग दीज गैसेस द वाटर वेपर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट component. Okay, water vapor was the most important component because hydrogen and oxygen were already there. They combined to form a water vapor, and these water vapor resulted into the condensations, and this condensation resulted into the cooling of the earth. Okay, it took a long time. So this cooling process, as a result of this cooling process, okay, the heavier material start moving towards the center and the lighter material surface. This is called magmatic differentiation. Magmatic differentiation. This is called magmatic differentiation. Okay, is it clear? इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको हम बोवेन रिएक्शन सीरीज कहते हैं. बोवेन रिएक्शन सीरीज. अगर आपने एक मटेरियल लिया है, अर्थ मटेरियल ले लो, जिसमें विच इंक्लूड्स ऑल द डेंसिटीज रॉक, ऑल द डेंसिटी मटेरियल, एंड यू मेल्ट इट, एंड इफ यू हैव अ मेल्ट, एक मेल्ट है आपके पास अर्थ मटेरियल का, एंड यू स्टार्ट कूलिंग इट, then you will find that at a different temperature, okay, at a different temperature, different density layers will be. So the rocks of iron and nickel are of more density and they will settle at a higher temperature. तो आप देखोगे कि मान लो सपोज करो इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड है, and when it cools down to around 1200 degree centigrade, you will find iron and nickel is there. Iron nickel, मैं एक आइडिया से बता रहा हूँ. Then you will find a different types of composition. Then you will find a different type. This is called magmatic difference, and this is similar to fractional distillation. You know that the distillation process के अंदर में अलग अलग temperatures पे अलग अलग component ले लिए जाते हैं, नहीं ले जाते हैं. It is similar to magma fractional distillation. Okay. And when the earth initially in a molten state, when it start cooling, so different density material, okay, they get settled at a different temperature. Okay,
and as a result different density layers were created, and this process is called to be as a magmatic differentiation. It's a very important term, geomorphology. And this also makes you to understand that how the outer crust of the earth was formed. भाई साहब समझ में आया? ओके, तो इससे आपको चीजें पता चलती हैं. चलिए, तो आज की सभा तो हमारी खत्म हो जाती है. तो कल फिर पढ़ के आना तुम लोग एनसीईआरटी से. कल से हम लोग फिर अभी बस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा दूं. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कैलकुलेशन ऑफ अ टाइम, टाइम की इक्वेशन क्या है वो पढ़ाना है. और वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट टाइम जोन्स, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 टाइम जोन्स इन इंडिया. भारत में 2 टाइम जोन्स का भी चल रहा है ना, कि 2 टाइम जोन्स कर दिए जाएं. भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग कर दिया जाए, इसके लिए एक अलग कर दिया जाए. उसकी यूटिलिटी क्या है? कॉलोनाइजिंग द मून, मून की कॉलोनाइज करने की बात चल रही है. अब इंडिया भी तो जा रहा है ना भाई. इंडिया के लिए जाना इसलिए भी जरूरी है कि भाई कैसा ना हो कि बाकी 3 नेशन जाके अपनी कॉलोनी बसा लें और बाद में हम देखते रह जाएं. क्योंकि अभी तो ओपन एरिया है ना, वो ओपन प्रॉपर्टी है ना. अभी तो ओपन प्रॉपर्टी किसी का क्लेम नहीं है. अब मार्स पे भी हमें जाके क्लेम करना है और हमें मून पे भी जाके क्लेम करना है. जैसे हम अंटार्कटिका पे अपना कब्जा बना लिया है कई जगहों पे अंटार्कटिका पे. क्योंकि जब सी आइस मेल्ट करेगी ना, तब सबसे ज्यादा लोगों में यही प्रॉब्लम आएगा कि अंटार्कटिका में किसके, क्योंकि अंटार्कटिका इज अ रिसोर्स रिच रीजन. तो अभी तो हमने अपने रिसर्च सेंटर्स खोल रखे हैं. ओके, जब व्हेन देयर विल बी मेल्टिंग, सो जिन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं है वो नहीं कर पा रहे हैं. बट बाद में चल के जिन जो लोग, वही बात है, जब न्यू लैंड पे जो पहला कब्जा कर लेगा उसी का लैंड हो जाए. होता ही है. ओके, हालांकि इसके लिए पूरी अंटार्कटिका वो बन रही है, ट्रीटी बन रही है. और वो भी है, ऐसा नहीं है इट विल बी एन इजी पार्ट, बिकॉज इट इज बिलीव टू बी एज अ कॉमन प्रॉपर्टी राइट नाउ, कॉमन यूजेबल प्रॉपर्टी फॉर एवरीवन. ओके, ठीक है बच्चों.